गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल वाली क्लास कितने लोगों ने नहीं देखी है? 1 2 3 4 5 6 7। क्यों? वर यू नॉट इन्फॉर्म्ड? व्हाई डिड आपको तो एंजॉय करना था संडे इवनिंग। पापा अगली बार मिले फिर बताता हूँ, है ना। अंकल ये तो एंजॉय करती रहती है। ओके, क्यों बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? टेलीग्राम नहीं देखा? ओके। ओके, चलो कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे आज घर जाने के बाद। प्लीज फिनिश दी class that you have missed. Yesterday we focused a lot on the basic fundamental areas, and today we'll jump onto more of its application. So for people who haven't watched yesterday's class, it might be a bit tricky, but I'll try to ensure that वो भी difficulty ना आए and we're able to understand most of the concepts. Sorry, ऐसे glimpse नहीं होता। ओके, कोई डाउट्स है? कल की क्लास से कोई डाउट्स है तो वो बता दीजिए। इफ यू हैव डाउट्स, यस। ट्रांसक्रिप्टोम, ओके, एक ट्रांसक्रिप्टोम समझा देते हैं। ओके, ट्रांस अदर देन ट्रांसक्रिप्टोम एनी अदर डाउट्स? ट्रांसक्रिप्टोम से पहले का कोई डाउट है? नहीं। okay. देखो, व्हाट्स योर नेम? वास्तु। तो वास्तु, देयर आर 20,000 प्लस जीन्स इन ईच ऑफ आवर सेल, राइट? ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर ऑन डीएनए दिस जीन्स आर देयर, बट these genes would be expressed only through mRNA. इसका जब mRNA बनेगा, it will go out to ribosome and make the protein manufacturing occur. But if mRNA is not there, let's say of the 20,000 genes here, for 10,000 mRNAs only are not being formed, then that gene is not going to get expressed. So if in a cell we ask here, what are all the mRNAs that we have? That is, what are all the genes which are going to get expressed? तो वो सारे जीन्स जिनका mRNA बन रहा है, that is part of the transcriptome. तो for a cell it is this, for a living organism वो सारे, like consider all the cells, cell 1, cell 2 and billion cells, and which are the genes which are getting expressed, वो चीज उसका mRNA होगा, बेसिक वो ट्रांसक्रिप्टोम होगा, because the expression is taking place through mRNA mechanism. Am I making sense? Did you get it? Okay. Anything else from the previous class? Yes. क्या करना है? चलवाना है, बंद करवाना है? सोनू जी आप यहीं खड़े रहिए, सबकी डिमांड पूरी करते रहिए आज। ओके, लेट मी लुक एट द ऑनलाइन डाउट्स। नहीं सिमरन, दैट मे नॉट बी द केस ऑलवेज। जहां भी आता है ना, देयर मे बी सम एक्सेप्शन। सर, PTGS can be called standard routine end of protein synthesis life cycle or it is, क्या बोल रहे हैं? PTGS can be called as standard routine end of protein synthesis life cycle। बेटा ये टर्म क्या बोला है, मुझे नहीं पता है। Okay, transcriptome reflects the genes that are being actively expressed at any given time. Yes, बट सर ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा ना बेटा। अब उसमें ये बोलना पड़ेगा ट्रांसक्रिप्टोम इन अ सेल या ट्रांसक्रिप्टोम इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ही सेइंग कि सर बट माइक्रो आरएनए भी तो आएगा। माइक्रो आरएनए में प्रिवेंट सम ट्रांसक्रिप्टोम्स टू नॉट, some mRNAs to not get expressed generally। देखो वो because of micro RNA mRNA are getting damaged, so that mRNA would not be there when we'll try to study what is the transcriptome, we'll not be able to find that mRNA, है ना। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर डाउट्स? तुम्हारे डिमांड्स पूरे हुए? नहीं? यस। रीड कर दो उसे, मैं कहां ढूंढूं?
cellular machinery for producing functional microRNA. देखो, हाँ अभी समझाते हैं। देखो क्या होता है ना, सेल हैज डेवलप्ड अ मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस माइक्रोआरएनए, जिससे हम एमआरएनए को रेगुलेट कर सकते हैं या एमआरएनए को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। स्टडिंग दैट वी कैन डेवलप मैकेनिज्म्स टू प्रोड्यूस microRNA otherwise also, and how to produce them in a manner so that हम RNA interference या बाकी चीजें करवा पाए। That is what it's saying. एक मिनट, मुझे ना दिखाई दो, कल का बुकलेट है किसी के पास? कल वाला बुकलेट तुम्हें आज वाला नहीं मिला? मिलना भी नहीं चाहिए। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, सिग्निफिकेंस में थर्ड पॉइंट, cellular machinery for producing functional microRNA is also employed to produce other small RNA molecule in both plants. बेटा यही ना, cells में the way microRNAs are being produced, that mechanism has been understood, has been learned, and using that we are producing microRNA in other places also. For example, RNA interference के लिए हम microRNA use कर सकते हैं। तो RNA interference एक तो naturally it functions, एक है we want to interfere with some RNA. How will we do that? We will do that. We can do it using microRNA. So how do we produce that microRNA? It was learned by this mechanism कि यार यहाँ पे microRNA कैसे produce होता है। हाँ बेटा, मैं आपको synthetic biology पढ़ाऊंगा। There you will see that we can create an artificial gene also. हमने एक small microorganism लिया, उसका genetic material पूरा निकाल दिया, and then we created our own genetic material and we inserted it there and made that microorganism function as per this genetic material. So that's doable, that's possible. Okay. Anything else? Yes. हाँ वो भी देखो बेटा, when nuclear bombing would occur, there would be some particles in the atmosphere, and when the rainfall occurs, they settle, and फिर उसको यूज करके you can फॉल आउट रेडियो। मैं एक बार क्वेश्चन एग्जैक्टली देखता हूँ फिर बताता हूँ बेटा। ओके इज डीएनए और जीनोम द सेम थिंग? बेटा जीन्स को ना हम जीनोम बोल रहे होते हैं, तो कई बार डीएनए जीन्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दे आर स्लाइटली डिफरेंट, टेक्निकली दे आर डिफरेंट। Okay, I think it's done. Let's start with today's class. Now before we go to applications and all, there are some more things. Jैसे yesterday we dealt with micro RNA, we dealt with other such stuff. एक और चीज पढ़नी है हमें, extra chromosomal DNA. Last year it was in news a lot, तो थोड़ा सा इसे जानते हैं। Extra chromosomal DNA, देखो we know where is our DNA located? It's located in our chromosomes, which is located inside the nucleus, है ना? Our DNA is on our chromosomes, but extra chromosomal DNA क्या होता है? देखो, are there some DNA in the mitochondria also? They may be considered extra chromosomal DNA, but here we are not referring to that. Here what we are referring to, cell, nucleus. Nucleus may we have chromosomes where our DNAs are there, but some DNA may have broken from there because of disease or because of natural process when replication is taking place at that time. Improper replication etc. may have led to some DNA getting broken from the main
or some genes getting broken from, or some DNA getting broken from the main chromosome, and it is here, not part of chromosome. These are extra chromosomal DNA. These DNAs are not part of the chromosome. They are inside the nucleus, but not part of the chromosomes. These are extra chromosomal DNAs. So ये तो समझ में आया पहले. Why are we calling it extra chromosomal? Because though they are inside the nucleus, they are not on the chromosomes. This now देखो in your mitochondria. In your mitochondria also some DNAs may be found. They are also extra chromosomal DNA. हम बोलते any DNA beyond our chromosomes are extra chromosomal DNA. So if you're asked a question, extra chromosomal DNAs are found inside the nucleus or outside the nucleus? Both the places. But this extra chromosomal DNA that we are going to study today, we are talking about this DNA जो nucleus के अंदर रह गया है. Okay, first understand the term extra chromosomal DNA. क्या हम सब comfortable है इसमें? Do we all understand the meaning of this? Now, what is extra chromosomal DNA? So these are some natural processes which can, there are some natural processes which can break DNA. जैसे एक होता है chromothripsis, which occur in some cancers and chromosomes are broken and rearranged, or cells can also make mistakes in DNA when making copies of it to imbue in new cells, and at that time some DNA may be broken, that remains in the nucleus, that is extra chromosomal DNA. Now, initially when extra chromosomal DNA was discovered, these were not something significant, or these were not considered to be something significant. We found that very few cells had these extra, or very few cells had this extra chromosomal DNA, and as such they were not creating any problems. ऐसा नहीं था कि some cancer cells had more of these extra chromosomal DNAs, but recent studies over the last 1 decade have shown their significance. Significance of what? Significance of extra chromosomal DNA. एक 2017 का study था which found that nearly 40% of the cancer cell lines, वो cells जो cancerous हो गए हैं, they have up to 90, they have extra chromosomal DNA, and up to 90% of patient derived brain tumor samples. Brain tumor के जो samples है जो हम patient से ले रहे हैं, those cells have extra chromosomal DNAs, indicating what? There is some correlation between cancer and extra chromosomal DNA. So initially when extra chromosomal DNAs were discovered for the first time, it was not of significance, but now we're realizing that they are associated with various challenges. Now, how are they formed? So देखो, exact we are not observing how they are formed, but it has been seen that environmental factors like a lot of smoking or exposure to some toxic substances or genetic mutation may trigger DNA damage, and जैसे DNA damage होगा, the DNA will be broken from where? Chromosomes, and extra chromosomal DNA may be produced. It is present in 17% of tumor samples, but more so in liposarcoma, brain tumors and breast cancer. Brain tumors के केस में we saw 90% of the patient derived brain tumor cells had what? Extra chromosomal DNA. तो कैंसर पेशेंट्स में अराउंड 17% केसेस में है, बट इन सम टाइप्स ऑफ कैंसर मोर ऑफ दीस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएस आर फाउंड, एंड this extra chromosomal DNA also increases after, let's say, chemotherapy, or it is correlated with metastasis. Now, chemotherapy we understand, chemical treatment of cancer cells so that those cancer cells die. तो उस टाइम भी we have seen that what increases? Extra chromosomal DNA के cases increases, पहला point, and it is correlated with metastasis. अच्छा, metastasis क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Cells transfer to long distance. Okay. Metastasis is a situation where the cancer cells, आपके बॉडी के एक पार्ट में कैंसर की प्रॉब्लम आ गई है, cancer cells through your blood or lymph nodes travel to other parts of your body and they spread cancer there. Let's say वो किडनी में ट्रैवल कर लिया and kidney में then they start growing. That is the situation of metastasis. तो there is a correlation. Correlation means ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड मेटास्टेसिस. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो हियर, वी आर ट्राइंग टू से हियर.
तो अभी एक्चुअली लास्ट ईयर व्हेन आई टॉट इट इन लॉट मोर डिटेल बिकॉज बहुत डिटेल स्टडी आई थी, तो मैं उन स्टडी को कोड कर करके पढ़ा रहा था, बट दिस टाइम आई एम रिमूविंग ऑल दैट, ओनली जो काम की चीजें आखिरी में. फॉरगेट द स्टडी. UPSC does not ask the study. They'll ask you about extra chromosomal DNA if they have to ask you, and then they'll ask you about कि यार implications क्या हो सकते हैं उसके. तो कैंसर पेशेंट्स में ज्यादा है, कैंसर सेल्स में ज्यादा है. We understand that. How are they produced? Because of environmental factors, because of pollution, those things can play a role. Chemotherapy can play a role. They may be produced in that scenario, and there's a correlation between metastasis. Did we understand what metastasis is? हाँ, कम होना, बट ना उसमें डैमेज भी तो कर रहे हो ना आप, इस वजह से वी सी. वैसे आइडियली कीमोथेरेपी से कैंसर कम होना चाहिए, बट द स्टडी हैव शोन दैट कीमोथेरेपी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट आल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ओके, नाउ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कैंसर के साथ कैसे एसोसिएटेड है ना. देखो, डू यू नो व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? कैंसर का स्टडी है ना. ऐसे ही ना एक टर्म होता है ऑन्कोजीन्स, genes which are responsible for cancer, and it has been found that in extra chromosomal DNA they are found more. So ecDNA often contain multiple copies of oncogenes, mutated genes capable of causing cancer. Oncogenes are those genes which have mutated and they can cause cancer, and इसकी extra copy कहाँ मिल रही है? Extra chromosomal DNA में, because of this. And these oncogenes are not present in chromosomes. When cells transcribe extra chromosomal DNA to mRNA, the process causes specific oncogenes to become 4 times more common, and chances of cancer will be much higher. ये समझ में आ रहा है? लास्ट में एक और चीज होती है, मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. थोड़ा सा बस इस टर्म को जान लो, फिर आई विल एक्सप्लेन हाउ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज हैम्परिंग इट. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. व्हाट इट सेज इज, सी वी हैव 23 pairs of chromosomes. We have 23 pairs of chromosomes. We have 46 chromosomes ऐसे. Now when I inherit some genes from my parents, so think of this. On this chromosome there are genes. So these genes which are on this chromosome, they'll be inherited together because the entire chromosome goes, no? But इस जीन में और इस जीन में साथ में आने का कोई कोरिलेशन नहीं है. This is Mendel's third law of independent assortment. Am I making sense? What does it say? The genes on the same chromosome are inherited together, while those on different chromosomes are distributed independently of one another. The basic genetic principle is called Mendel's third law of independent assortment. ये अभी don't worry about extra chromosomal DNA, just understand what I'm trying to say here. I cannot go into एकदम medical science पढ़ाने के लिए, but I'm trying to explain it in simple language. And are we getting this? सबको समझ में आया? Because it is the chromosome that is going to other cell. तो अगर ये पूरा chromosome जा रहा है तो इस पे जितने भी genes हैं, they'll all go. तो if this gene is going to the next generation, then इस पे दूसरा gene है that will also be going to the next generation. So that is correlated, whereas this and this may not have correlation. ये वाला क्रोमोसोम, जब ये क्रोमोसोम गया है तब बच्चों में गया होगा या नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. दिस इज मेंडल्स थर्ड लॉ. अब आते हैं हाउ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वायलेट्स इट. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के केस में तो क्या होगा? टूटे फ्रेगमेंट्स हैं, कहीं से भी टूटे हैं, किसी भी क्रोमोसोम से टूटे होंगे. आर वी गेटिंग इट? एंड दे मे अकर टुगेदर. And one fragment has been broken, other may not have been broken. तो जब एक जीन प्रेजेंट है दूसरा may not be present from the same chromosome. Extra chromosomal DNA में that scenario can be there. तो is it breaking the Mendel's law of independent assortment? यहाँ पे आ जाइए. The above studies have shown that extra chromosomal DNA is passed on in cluster to the daughter cells
during cell division, which is a violation of third law. That is, extra chromosomal DNA is passed in clusters, like rather than एक क्रोमोसोम वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अलग, दूसरे क्रोमोसोम वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेपरेट, थर्ड क्रोमोसोम वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेपरेट. नो, they are passed in clusters, and thus the Mendel's law of independent assortment gets violated. ये समझ में आ रहा है? Last, the study had also shown, we have understood this कि extra chromosomal DNA are problematic, है ना? कहां पे ज्यादा मिल रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में? कैंसर सेल्स में. There is correlation. बट जो ये 2024 दिसंबर में ये स्टडी था नेचर में जो पब्लिश हुआ था नवंबर दिसंबर में, दे आल्सो सेड दिस कि देयर इज अ सॉल्यूशन टू. When the researchers used a drug called BB12779 that blocks CHK1, they found that the drug selectively killed cancer cells with extra chromosomal DNA. So basically, a medicine which can deal with extra chromosomal DNA may be soon found, and it will be able to kill cancer cells, significantly reducing the number of tumors in mice with cancer stomach. हम पहले चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. Yesterday I was telling you कि they have a lot of genetic similarities to us. Their immune system works like us, and thus a lot of medicines are tested on them. And because of extra chromosomal, because of this study, we may have a solution also to the problem which are being caused by extra chromosomal DNA. ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, I know we may not have a crystal clear picture पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक, बट उसकी जरूरत भी नहीं है. Again, if I'm given one whole class to teach only extra chromosomal DNA, I may give you that kind of picture. But पहली चीज, what is extra chromosomal DNA? We understand. दूसरा, extra chromosomal DNA are found more in cancer cells. Initial studies had not shown that, and we had not given a lot of significance to extra chromosomal DNA. But the new studies have shown that. ये वाली चीज समझ में आ रही है? Then how Mendel's third law of independent assortment is getting violated. How that is getting violated? ऐसे क्रोमोसोम एक साथ जाएगा, but here when it is fragmented and it's coupled together, they go together in the form of extra chromosomal DNA. And finally, some एक solution भी निकल रहा है कि in mice studies have shown that a medicine is able to target the problems caused by extra chromosomal DNA. इतना समझ में आ रहा है? ओके, बस इतना जानना है और कुछ नहीं. Okay, now let's talk about dark DNA. Do we remember dark matter? Dark matter क्या था, कोई बताएगा मुझे? Dark energy, dark, हाँ धनंजय. रुक जाओ, बस dark matter. तो नहीं, that's not necessarily dark matter. इन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो अपनी गैलेक्सीज को साथ में होल्ड कर रही है, that is dark matter. उसमें तो नॉर्मल मैटर भी है ना. When we study normal matter, we realize कि normal matter is not in enough quantity to hold the galaxy together. So there must be some more matter which we haven't been able to identify. That is dark matter. So matter, a form of matter which we haven't been able to study, which we haven't been able to identify, whose property we do not know about, is what? Dark matter. समझ में आया? Why what you said was slightly गलत, conceptually थोड़ा सा गलत. तो dark is about we not knowing about the matter. Dark matter में dark is basically हम नहीं जानते उसके बारे में कुछ. We are not able to study about it. That is how we are explaining what dark matter is. आ जाते हैं dark DNA की. Let's talk about dark DNA. देखो, on our DNA, अच्छा, to understand dark DNA, let's consider a scenario. There is this rat. ऐसे ही बना पाता हूं मैं rat. चूहा, है ना? There is this चूहा. Scientists were studying it, and इन्होंने इसका जीन स्टडी किया, पूरा डीएनए स्टडी किया, जीन मैपिंग किया, and they found gene which is responsible for production of insulin is not here.
gene which is responsible for producing insulin is not there in this chooha. Without insulin, we cannot survive. This mammal cannot survive without insulin. So they were like, how is this species surviving? It doesn't, if it doesn't have gene, if it doesn't have a gene which produces insulin, if it doesn't have this gene, how is it surviving? बिना insulin के तो हम जी नहीं सकते. The scientist studied the rat and they found, अरे insulin तो है इसकी body में. Insulin exists in the body. That is why it is surviving. But where is the gene which produces insulin? We were not able to find that. Understood? उतना gravitational force तो है कि galaxy is held together. Gravitational force, insulin दिखा रहा है. But where is this force coming from? Where is the gene? We haven't been able to identify that. It means our current gene sequencing tools are not good enough. We have not been able to identify a lot of genes on our DNA. And the part of DNA which we haven't been able to sequence, which we haven't been able to understood, which we haven't been able to map is the dark DNA. क्या समझ में आया? The concept of dark DNA? All of us have clarity on this? What is dark DNA? DNA which exists, its impact is also visible. Insulin produce हो रहा है ना, मतलब इसका expression भी हो, it's also getting expressed. इसका mRNA बन रहा होगा. I'm sorry. इसका mRNA बन रहा होगा, इसका प्रोटीन भी बन रहा है, but we haven't been able to yet identify this gene or many such genes. This is dark DNA. Dark matter, dark DNA connect कर पाए? Why the name dark DNA? है ना? अब now what is its significance? Knowing that dark DNA kind of thing exists, what is its significance? That पहला significance तो ये है, we understand that we have to have better tools. But दूसरा, there are so many diseases which are occurring, we don't know the reason for it. Many of them maybe because of the part of the DNA which we haven't been able to study yet. It can also help us better understand our ancestry, our inheritance. कैसे? When we study, let's say, evolution, we believe that we have come from apes. है ना? हम पढ़ेंगे in biodiversity. I'll explain you कि how we have evolved. We come from apes, और उसमें हम देखते हैं पहले हम ये थे, फिर हम ये थे, फिर हम ये थे. How do we do that? We do it by looking at the similarity in the genes. But if we do not have tools to understand genes properly yet, right now we do not understand this ancestry properly. As we are able to improve our tools, we'll be able to see more genes and then we'll be able to understand किससे ज्यादा similarity है. Right? So it is significant for that purpose also. Is it making sense? क्या हम सब dark DNA को समझ रहे हैं? Notes में यही लिखा हुआ है. Notes में this is written. Today you'll go home and you'll read it once. All of you. कोई बीमार मत होना. हो गए? मास्क दिलवा दो. है? पक्का अगर किसी को खांसी वासी आ रही है, मास्क, क्योंकि ना in a big classroom, when you cough or sneeze and that virus floats, आप में से कोई बीमार हो जाए मुझे चिंता नहीं, मुझे अपनी चिंता है. Because I cannot take a single day's break because you have tests planned accordingly. ये प्लान करने के बाद in last 1 month I'm realizing how stressful this is going to be. पहले ऐसा होता ना कि एक दिन संडे की क्लास एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे यार, टेस्ट का सिलेबस कुछ और कर देंगे. अभी वो पॉसिबल नहीं है. अभी वी हैव टू फिनिश एवरीथिंग इन टाइम, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू फॉल सिक. आप तो कर लोगे बाद में, मैं नहीं कर सकता. इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट प्लान ऑफ ऑल दी 500 स्टूडेंट्स हु मे बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस. टेस्ट सब देते नहीं है, नालायक है. देते हैं सब, थोड़ी देते हैं. तुम सबकी जिम्मेदारी ले रही हो. हाँ, सब बोला मैंने, एक्सट्रीम स्टेटमेंट.
Okay, तो do we all understand what dark DNA is? पक्का? सिग्निफिकेंस इसका हमारे डिजीजेस को समझने के लिए, हमारे एंसेस्ट्री को समझने के लिए, इन सब के लिए कैन इट बी प्लेइंग अ रोल? ओके, तो प्लीज प्लीज रीड दिस. ये सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे. सॉरी, नो नो, जंक डीएनए. व्हाट इज जंक डीएनए? ये टर्म तुमने खुद बनाया ना अभी. नॉन कोडिंग को जंक मत बोलो यार. मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये सारी चीजें नॉन कोडिंग में ही आ रही थी ना. दे आर नॉट जंक. अच्छा, ये कोई टेक्निकली ये यूज होता है क्या? ये सोनिया मैम ने पढ़ाया है क्या? नहीं. ऐसा कोई टर्म है? ठीक है, जंक जंक नहीं, नॉन कोडिंग बोल लो. ऐसा मत बोलो यार. ओके. Let's talk about genetic engineering now. We'll go to gene modification, gene engineering, and we'll talk about those dimensions. जिनको नोट्स नहीं मिले होंगे प्लीज हाथ उठा दीजिएगा. मिंटू जी पीछे दे रहे हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो, what is the base? Yesterday we dealt with classical biotechnology and modern biotechnology. What was classical biotechnology? Biotechnology is use of biological processes, systems to produce service, goods and services which are useful to us. That is biotechnology. है ना. उसमें when we don't modify the organism, और तब हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसे यूज कर रहे हैं, then it is classical biotechnology. For example, in curd making we use certain bacteria. In alcohol making we use yeast. In the production of penicillin we use penicillium mold, but we don't modify it. All those were examples of classical biotechnology. But modern biotechnology में what do? We make some changes in the biological system. जो naturally वो ऐसे काम नहीं करेगा, we modify it a bit. That modification is done by genetic engineering or genetic modification. तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं. तो what is the basis are two core things which have enabled the birth of modern biotechnology. दो चीजें हैं. जैसे क्लास 12 एनसीईआरटी में जाएंगे. मैंने बायोटेक्नोलॉजी, मोस्टली जो बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं क्लास 12 की एनसीईआरटी वाले सेक्शन से पढ़ा रहा हूं. आपको नहीं पढ़ना है. आपको अगर साइंस पढ़नी है तो जस्ट रीड साइंस टिल क्लास 9 10 की एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो. दैट्स इट. 11 12th में से जो भी पढ़ना होगा आई विल कवर इट. जैसे न्यूक्लियर साइंस टेक में सम थिंग्स आई टुक फ्रॉम देयर बायोडाइवर्सिटी में. देयर आर अ फ्यू चैप्टर्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजी चैप्टर. आई विल मेक श्योर दैट इट इज देयर इन योर नोट्स ओनली. ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में these some theoretical part की the basis for modern biotechnology. Modern biotechnology has been made possible by two things. One is genetic engineering. Genetic engineering is engineering the genes, making some changes in the genes. Yesterday we understood how that can be beneficial. So technique of altering chemistry of genetic material to bring about desired modification into host organism, or changing genotype to bring changes in the phenotype. Phenotype क्या होता है? The set of observable characteristic of an individual. उसको आप कैसे, phenotype is an impact of genotype. So changing genotype to bring changes in the phenotype is the genetic engineering. जैसे jellyfish glows at night. किसी ने jellyfish देखी है? रात में चमकते हुए देखी है? Suppose we wanted कि अपना धनंजय चमके रात में. What is the purpose? How will we do that? We'll bring the genes from jellyfish and we'll have to put them in Dhananjay. Or when Dhananjay was a single cell, all life forms start from a single cell. आप अगर डायनासोर को भी देखते हैं या फिर you look at blue whale, the life of blue whale also starts with a single cell. तो धनंजय once upon a time, आज से 20-25 साल पहले एक सिंगल सेल था. उस सेल में जाके, न्यूक्लियस में जाके, we would have inserted some genes of jellyfish. Then वही genes, वही proteins धनंजय would have also produced throughout life. और अभी लाइट चले जाए, धनंजय यहां चमक रहा. Right? Genetic engineering may make it possible. We don't do it. This would have been problematic.
ये हम डिजाइनर बेबी बना देते। धनंजय के पेरेंट्स को लगता कि हमें ऐसा बच्चा चाहिए जो रात में चमके, वी वांट अ स्टार। then that this baby would have been designer babies. Designer babies are not allowed. मतलब जो global norms है उसमें we don't make genetic changes in human beings yet. We have not yet authorized changes, genetic modification in human beings. But how would that be possible? That will be possible by genetic engineering. Now genetic engineering का ना एक advantage है over other kind of changes. जैसे एक mechanism होता है hybridization. Hybridization में what do? We do this. Let's say हमें एक we want some features of European cows into our cows. वहां की जो गायें हैं, जर्सी गाय न्यू जर्सी से, वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है, अपनी वाली इतना दूध नहीं दे रही है, तो वी वुड वांट कि भाई यू I'll bring some features here. So what we do, we make them mate together. When they mate together, some of their features come here. But the problem is, this is random. हम जो फीचर चाह रहे हो वो नहीं आ पाए तो? Whereas in genetic engineering, you can specifically choose, मुझे यही जीन चाहिए, and I'll get this gene inserted. तो hybridization वाले मेथड में you'll have to do multiple tries. Eventually, in one try, what would happen? The gene that you wanted in this cow, in this variety, may come. But in genetic engineering, we can exactly choose मुझे कौन सा जीन चाहिए, and I can precisely insert that. This is one advantage of genetic engineering or genetic modification over hybridization. Now, एक और चीज which was necessary for making genetic engineering possible or biotechnology, modern biotechnology possible, was ability to have sterile ecosystem. वैसा ecosystem जहां पे कोई बैक्टीरिया वायरस भी ना हो. Only there will be able to do एकदम वो वाले experiments, वो वाले changes which are needed for modern biotechnology. So these two things, genetic engineering and maintenance of sterile ambience in chemical engineering process. These are two things which have enabled modern biotechnology. Now थोड़ा सा और समझते हैं genetic engineering के लिए what are the tools which are needed. ये सारे terms जानते जाओ क्योंकि एग्जाम में when these terms come you should not be blank. So what are the tools of genetic engineering? Sir, Zunk DNA is a term used in anthropology. Okay. करण सर से बात करेंगे. क्या बात कर रहे थे हम? Tools नहीं. Tools like to make genetic engineering happen or to make changes in the DNA. What are the tools which would be needed? Now, please understand. What do we want? We want this. कि यार यहाँ पे कट करो and insert some other gene here. है ना? तो we would first want a cutter, a scissor. Then we would want a outside gene that we want to insert here. Then we would want वो gene जुड़ भी जाए. Something like Fevicol. है ना? Are these things? Do we need these things? तो जो biotechnology में जो scissor होता है, which will make the cut, those are known as restriction enzymes. What is restriction enzyme? Restriction enzyme or restriction endonuclease is an enzyme that cuts DNA at a near specific recognition nucleotide sequence known as restriction site. They say you will see. If you want to make cut here, to insert a new gene, how will you make that cut? You will make that cut using restriction enzyme. So restriction enzyme is basically your scissor. Your restriction endonuclease is basically your scissor. दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है cloning vector. What is cloning vector? Now see, when some gene has to be inserted in my body today, it will be inserted through a vector. Vector, maybe let's say a virus. उस virus में that gene would be put, and that virus would be put in my body. As that virus infects my cell, मेरे cell virus will start multiplying only when it enters a cell. Outside a cell, a virus cannot multiply. Virus will multiply, and then it will go and infect another cell, infect another cell, infect another cell, and so on.
But in the process, virus के अंदर the DNA that I had inserted from outside, has it gone into many of my cells? So vector, virus is also the vector, but it's also cloning vector because it creates copies of those modified DNA that I want in all my cells. Am I making sense? Let's say this is a virus and it has this genetic material. It has this genetic material. I want to put some other gene in my body. I want this gene to be put in my body. Let me color it in blue. I want this gene to be put in my body. What I'll do is, first I'll add this gene here in this virus. Now this virus goes and infect one of my cells. After it reaches my cell, it will multiply. इस वायरस की 2 कॉपी बनेगी, but in both the copies will I have this extra gene and so on. तो ये वेक्टर भी है. It is through this I am taking the new gene in my body and it is also cloning the gene, cloning vector. Is it making sense now? तो tools में the first tool that we read is restriction enzyme. Second is cloning vector. Third is the Fevicol, DNA ligase. It's a specific type of enzyme, a ligase that facilitate joining of DNA together. When a cut is made, you want to insert some new gene in there. After that new gene is inserted, there has to be a bond created, diester bond, phosphodiester, phosphate group और sugar के बीच में a bond has to be created. That is done by DNA ligase. And in the end, we have the host organism, the organism where the gene would be inserted. Finally, gene has to be inserted, the organism where it is inserted. So, restriction enzyme, many of these terms may be new to you. इसीलिए you want to be comfortable with this. Restriction enzyme, scissor, cloning vector, the vector with the help of which you are taking the modified, the new gene into your body, and it is also helping us in cloning it. DNA ligase, the gum or the Fevicol, which will, जो new gene आप insert करोगे उसके बाद you will have to create a bond there. DNA ligase helps you in that. And finally, we have the host, where this has to be inserted. तो अगर हमें jellyfish वाले genes insert करने हैं अभी, in Dhananjay, who will be the host? Dhananjay will be the host. How can we insert genes there? There are many mechanisms. One is vector wala mechanism, cloning vector wala mechanism, but there are these options available. Techniques such as micro injections are used. Here, recombinant DNA. Recombinant DNA is the modified DNA is directly injected into nucleus of an animal cell. अब क्या धनंजय animal है? हाँ, animal है यार. We're all animals. We're all part of animal kingdom. है ना? Earth पे life form is divided into 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. हम सब एनिमल किंगडम में ही हैं. हम सब जानवर हैं. तो बचपन में मम्मी डांटती थी ना, जानवरों की तरह रहता है, सफाई कर. जानवर ही है, तो जानवरों की तरह ही रहेंगे. Isn't it? So, because he's an animal, what can be through micro injection, the gene can be directly inserted into his nucleus. तो micro injection, अभी how will it function in detail नहीं. Micro injection is one of the mechanisms by which recombinant DNA can be inserted into the nucleus of an animal. ऐसे ही there is another mechanism known as biolistic or gene gun mechanism. Here जो अपना modified DNA है, we put them in a we insert it in the plant with the help of microparticles of gold or tungsten which are coated with the DNA. So microparticles of gold or microparticles of tungsten, they will be coated with the DNA and they can be inserted using a biolistic or gene gun. This generally happens for plants. Animals के लिए this micro injection mechanism is there. Plants के लिए we have this, or we can also use
vector वाला mechanism where some virus may be used for inserting the gene. समझ में आया? तो होस्ट में कैसे लेके आओगे? You can use the viral vector वाला mechanism, or you can use the virus as a vector वाला mechanism, or you can use micro injection or biolistic or gene gun, or there are many other things. सबको नहीं पढ़ सकते, right? Yes. हाँ. बेटा देखो यहाँ पे ना एक टर्म यूज हुआ होगा, डिसआर्म्ड पैथोजेंस. डिसआर्म्ड मतलब उसके हार्मफुलनेस को हम खत्म करते हैं. कल ना वो पढ़ेंगे वैक्सीन्स वगैरह, देयर विल अंडरस्टैंड दिस. मैं वैक्सीन्स बायोटेक में भी पढ़ा देता हूँ, पर आज मैंने बायोटेक में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी बायोटेक बहुत बड़ा है. मैं हेल्थ में वैक्सीन पढ़ाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू कि एक हम ना वो वेक्टर्स यूज करते हैं विच आर नॉट वेरी हार्मफुल फॉर अस. फॉर एग्जाम्पल, जब आपने कोवैक्सीन लिया, अपन ने कोविड के लिए वैक्सीन लिया था, कुछ लोगों ने कोविशील्ड लिया होगा, कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लिया होगा. तो कोवैक्सीन में क्या था? वो कोरोना वायरस ही था जो आपकी बॉडी में डाला गया है, उसका वीकेंड फॉर्म, so that your body will generate antibodies, so that when its harmful form will come, your body will already have antibodies. दूसरा, कोविशील्ड वाले मैकेनिज्म में we chose another virus. हमने कोविड वाला वायरस नहीं डाला, हमने दूसरा वायरस लिया which causes common cold to us. तो all of us get infected by it at one or the other time in our life. हमने उस वायरस में कुछ जेनेटिक चेंजेस किए and then that was put in our body. तो that was not harmful for us. तो कल मैं इसे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी. अभी फॉर दोज ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, इग्नोर इट. यू विल ऑल अंडरस्टैंड वेरियस वेज ऑफ मेकिंग वैक्सीन टुमारो. ओके, क्या सब लोग कंफर्टेबल है इसमें? लेट्स नाउ गो टू वेरियस जीन एडिटिंग टूल्स बिफोर क्रिस्पर. हमें क्रिस्पर पढ़ना है डिटेल में, हमें क्रिस्पर पढ़ना है, बट बिफोर क्रिस्पर विच वर द जीन एडिटिंग टूल्स, एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए. क्रिस्पर विल गो इनटू डिटेल्स. यस, उसका एक्चुअली होता क्या है ना, वायरस गोज इनटू योर बॉडी, गोज इनटू अ सेल, एंड वहां पे इट रिलीजेस. वी डेवलप अ मैकेनिज्म वेयर दिस DNA will be released and it will go into your nucleus. As it goes into your nucleus will produce required mRNA and that DNA will start getting expressed. It's not going to impact all your cells. जीन थेरेपी में हम ये यूज करेंगे, बट इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल योर सेल्स. आपको सारे सेल्स को इम्पैक्ट करवाना है, तो जो ओरिजिनल एक सेल से सारा सेल बना है वहां पे मॉडिफिकेशन, या ओरिजिनली अ फ्यू सेल्स वर देयर, यू मेक मॉडिफिकेशंस देयर, देन यू विल बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अभी नहीं. तो देयर आर मैकेनिज्म्स अवेलेबल. जो आपसे जो सवाल पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली जीन कैसे मॉडिफाई होता है, इट दिस मैकेनिज्म हैज मेथड्स थ्रू विच वी एंश्योर दैट द बाहर वाला जीन is actually able to go in our nucleus and is able to get expressed there. Okay, now various gene editing tools before CRISPR. CRISPR पे ही आएगा, and that is why इन सबका बस नाम जान लो. Other gene editing tools which existed before CRISPR, we will just know what? We will just know their names. We don't have to worry about technically how did they function. देखो, there are three things. एक है simple transgenesis. It refers to process of introducing an outside gene or a modified gene into recipient organism of the same or different species from which gene is derived. Transgenesis. Transgene gets incorporated into genome of the host organism and can be transmitted to offspring also. This wasn't very successful in the sense, ये ना randomly कुछ भी insert हो जाता था, कहीं भी insert हो जाता था. It was not very precise, it was not very accurate, but the first genetically modified organism that we created was using transgenesis mechanism. It was effectively used to insert exogenous DNA sequence into E. coli plasmids without disrupting the bacteria's biological function, resulting in the first genetically modified organism. अब एक और है homologous recombination. It was the first precise gene editing technique. Detail में नहीं जाएंगे. It was not precise, like transgenesis was not precise. Homologous recombination was the first
प्रिसाइज जीन एडिटिंग टूल, और यहां पे एक और चीज देखे, जीन फिंगर न्यूक्लियस ZFN. In the 1990s, researchers started using gene finger nuclease to improve the specificity of genome editing. तो कहां पे जीन एडिटिंग करनी है, एग्जैक्ट किस लोकेशन पे करनी है, दिस zinc finger nuclease was able to help us in doing that. तो जनरली zinc finger nuclease along with homologous recombination was used to do gene editing before CRISPR came. And एक लास्ट में मेथड था टैलेन मेथड, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर like effector nuclease. Talents are used in gene editing tool like ZFNs and are engineered from proteins found in nature and are capable of binding to specific DNA. तो वहां पे ZFN and talents are comparable in terms of efficiency. Talent mechanism is simpler. तो efficiency wise ZFN and talent are similar, but मैकेनिज्म ZFN वाला सिंपल था. अब आप सोच रहे होगे सर ये मुझे बताओ जिंक फिंगर न्यूक्लियस नहीं है, बट यू शुड जस्ट नो दीज टर्म्स. जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टैलेंस, ये सब क्या है? ये सब जीन एडिटिंग के मैकेनिज्म बिफोर क्रिस्पर केम. एग्जाम में इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, अभी तक 2-3 टाइम्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, दे हैव बीन आस्क्ड अबाउट क्रिस्पर, तो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट क्रिस्पर ओनली. बट थोड़ा सा कई बार क्या होगा ना, दे मे यूज दीज टर्म्स इन एग्जामिनेशन पेपर. तो व्हेन यू हियर जिंक फिंगर न्यूक्लियस, यू शुड बी लाइक हाँ ये जीन एडिटिंग का कुछ तो था, इतना ही कुछ तो था. टैलेंट्स जीन एडिटिंग से रिलेटेड कुछ था, इतना चाहिए मुझे. क्या कर सकते हैं इसे? नाउ लेट्स गो टू क्रिस्पर. लेट्स अंडरस्टैंड क्रिस्पर. CRISPR-Cas9. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अलाउड इन एनिमल्स. हाँ हाँ, हमने तभी तो हम चूहे पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं ना. इट्स अलाउड इन एनिमल्स. अभी ग्लोबल नॉर्म्स डोंट अलाउ इट इन ह्यूमन बींग्स, बट स्टिल आफ्टर CRISPR-Cas9 हैज सिंप्लीफाइड जीन एडिटिंग, हमने ह्यूमन बींग्स को भी मॉडिफाई कर दिया है. चाइना में एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, डिजाइनर बेबीज क्रिएट किए. नॉट वो, he did it for good purpose. He made them immune from HIV. वो बच्चों को, तो नाउ HIV वायरस विल नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट. अभी हम उसकी बात करते हैं, डोंट वरी. बट एनिमल्स में क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलाउड है? हाँ अलाउड. ओके. कैन जीन क्लोनिंग इंड्यूस म्यूटेशन? यस. म्यूटेशन क्या है? आपके जीन में चेंजेस होना. तो क्या जीन क्लोनिंग के टाइम म्यूटेशन हो सकता है, बट क्यों करना है, हमें उन सब में क्यों जाना है? ओके. वी हैव गॉट 6 hours टू स्टडी बायोटेक, है ना. क्लास 12th की बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं पूरे. 10-12 चैप्टर्स के लिए 10 महीने मिलते हैं. 2 चैप्टर्स में 2 महीने मिल रहे हैं क्लास 12 में टू स्टडी बायोटेक. प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू स्टडी ऑल दैट इन हाउ मच टाइम? 5-6 hours. Are we understanding this? Are we getting this? तो हर चीज के डेप्थ में जाओगे तो फिर क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ पाओगे. ROI होना चाहिए ना किसी भी चीज के लिए. व्हाट यू मे थिंक कि सर व्हाट इफ उन्होंने पूछ लिया तो छोड़ देंगे. वी हैव टू मेक 60 क्वेश्चंस राइट आउट ऑफ 100 टू गेट सिलेक्टेड. एक उन्होंने हाईली टेक्निकल सवाल पूछ दिया जो जिस बच्चे ने बायोटेक में बीटेक करी है वही कर पाएगा. ठीक है, छोड़ देंगे ना. आपसे उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स का एकदम वो वाला सवाल पूछा जो मैंने 3rd ईयर और एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स में 4th ईयर में पढ़ा है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाने लग जाऊंगा. ROI भी तो होना चाहिए ना. I studied advanced computer network for 6 months in 3rd year, 6 months in 4th year. मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूं. I'll not start teaching you that. Okay, तो बस सीख रहे हो, PYQs करो, जाओ. You're not here to become scientist, you're here to clear a examination. एग्जाम में जो चीज आएंगी, the things which are going to come in exam, which have high probability of coming in exam and which is going to determine your selection, we should focus only on that. Okay, let's now come to CRISPR-Cas9. तो first of all, CRISPR-Cas9 क्या है? जीन एडिटिंग टूल है, but it is simpler, faster, cheaper and way more versatile. It can be used in many different situations than the older methods. It's also more accurate.
जनरली चीज सिंपल हो जाती है तो चांसेस आर दैट दे मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, बट इट्स ऑल्सो मोर एक्यूरेट. अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज was also won by people who developed this. But CRISPR, सबसे पहले we will understand CRISPR, but ना CRISPR का आइडिया कहां से आया, CRISPR-Cas9 टूल का आइडिया कहां से आया? The idea came from nature. What happened? Nature में we were studying bacteria, and we found that bacteria protected themselves from future attack of virus by using mechanisms through which they can cut the genes of those viruses. बहुत precisely. They were able to precisely cut those things. They used Cas9 protein for that, or they used Cas protein for that. वहीं से हमने derive किया कि अच्छा, if they are able to precisely do this cuts, why can't we use that for genetic modification? The inspiration for CRISPR-Cas9 tool came from nature. Bacteria, एक बार वायरस ने उन्हें इन्फेक्ट किया, तो when virus infects us, do we fight against it? Yes, we fight against it. But bacteria were also keeping something known as CRISPR, a kind of copy of a part of their genome, which created problems. So that in future, when this will come, CRISPR was the copy, Cas9 was the enzyme through which cut was being made. Using Cas9, I will go and make the cut in the virus, protecting me. Inspiration पहले समझो. CRISPR is the sequence and Cas9 is the enzyme. Cas is the enzyme by which, so CRISPR is the sequence that they're keeping to remember this virus for future. अभी तुमने मुझे इन्फेक्ट तो कर दिया, परेशान किया, but now I remember you. How do I remember you? With the help of CRISPR. I'm keeping a copy CRISPR here. And next time when you come, I'm going to make cuts very precisely. Scientists studied this in bacteria. They developed a tool using this mechanism for gene editing. That is CRISPR-Cas9 tool. UPSC प्रीलिम्स में 2 बार पूछ चुका है, मेंस में अभी तक नहीं पूछा, प्रीलिम्स में 2 बार पूछ चुका है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल गया. 2 बार पूछने के बाद, एक तो होता है ना नोबेल प्राइज मिलने के बाद पूछा है, नहीं, because it's something which was discovered recently, but still its impact is so huge that it got Nobel Prize very quickly. पहले समझ में आया क्या? अभी we'll also play a video, we'll also go through the notes, we'll understand everything about CRISPR-Cas9, but सबसे पहले समझो CRISPR-Cas9 क्या है, where does the inspiration come from? तो the inspiration of developing CRISPR-Cas9 came from CRISPR system used by several bacteria to fight against bacteriophages. Bacteriophages are viruses which infect bacteria. CRISPR are short DNA sequence found in genome of prokaryotic organisms such as bacteria. So these are short DNA sequences in the genome of bacteria which are reminders of viruses. जिन वायरस ने इन्हें पास्ट में इन्फेक्ट किया है उनके रिमाइंडर्स हैं ये. Cas9 enzyme, part of the bacteria's defense mechanism, uses these flags to precisely target and cut any foreign DNA, thus protecting the bacteria from future attacks by similar bacteriophages. Inspiration पहले. अब देखो, if you'll note carefully, इस पूरे चीज पे पैराग्राफ में ना मैंने ज्यादा कुछ अंडरलाइन नहीं किया है. The things that I underlined, the things that I bold, I expect you to read it in your second or third read. बाकी हर चीज रीड नहीं, एक बार घर जाके पूरा नोट्स रीड करोगे. But after that, in the second round, preferably only read the things which are in bold or which are underlined. And if you're not able to understand the concept from this, only then read rest of the things. Are we understanding this? The purpose, तो ये सारे नोट्स मैं खुद बनाता हूं, खुद टाइप करता हूं, खुद अंडरलाइन करता हूं, खुद फॉर्मेट करता हूं. These notes have not been prepared by anyone else. मेरे नोट्स में आपको जितनी भी चीज पढ़ाऊंगा, if I'll teach you something, I have typed each and every word myself. एक एक वर्ड मैंने खुद लिखा है, एक एक वर्ड मैंने खुद अंडरलाइन किया है, एक एक वर्ड मैंने खुद बोल्ड किया. तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव केप्ट इन बोल्ड और आई हैव अंडरलाइंड. पर्पस है कि रिविजन शुड बी इजी फॉर स्टूडेंट्स. डोंट रीड एवरीथिंग. एक बार घर जाके पूरा रीड करोगे, देन यू विल जस्ट रीड द बोल्ड एंड अंडरलाइंड पोर्शन.
है ना। और इवन लाइक व्हेन यू लुक एट दिस, द इंस्पिरेशन फॉर क्रिस्पर, आपके दिमाग में स्टोरी आनी चाहिए। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज वायरस, तूने इन्फेक्ट तो कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन माय डीएनए, आई एम कीपिंग क्रिस्पर which is a reminder of this virus. Next time when this virus comes, this reminder will tell me exactly मुझे कहां पे काटना है उसके जेनेटिक मटेरियल को. And how will I do that? Using Cas9 protein, Cas9 enzyme. ये स्टोरी समझ में आएगी. अब आते हैं these two people, Emmanuel, I may be pronouncing these names wrongly because uh, uh, different countries have different pronunciation. So Emmanuel Carpentier of France and Jennifer Doudna of the US, they won Nobel Prize in Chemistry in 2020 for developing CRISPR-Cas9. This was the first time a Nobel Science Prize has gone to a women-only team. No, Science Prize, Nobel Science Prize had never gone to women-only team. This was the first time. And these two professors, Carpentier and Professor Doudna, were just the 6th and 7th women to receive Nobel Prize in Chemistry. And this was the first time a Nobel Science Prize went to women-only team. How does CRISPR-Cas9 function? अब इसमें देखो, come here. This must be an image here. Here I'll explain you. Suppose you have to make a cut here and you have to insert something here. CRISPR-Cas9 tool that we use in our labs has guide RNA. Guide RNA is designed in such a way that it will be able to go and get attached to the place where cut has to be made. So you'll see this guide RNA comes and attaches itself here. Then comes the Cas9 enzyme. It is the scissor. Guide RNA has guided it. वही cut कहाँ लगाना है? Precisely बता रहा हूँ. Guide RNA is like the reminder there. And Cas9 is going to make the cut, and cut लगाने के बाद, if you have to insert some other gene from somewhere else, you will insert it. If you have to modify it, you will modify it. If you have to edit it, you will edit it. Applications. अब यहाँ ना applications, though I'm writing something, but all the applications of biotechnology that we'll talk about, all the application of genetic engineering that we'll talk about. What is CRISPR-Cas9? It's a genetic engineering tool. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जो भी एप्लीकेशंस होंगे, they'll all be doable by CRISPR-Cas9, है ना. इसका कुछ कंसर्न्स है. कंसर्न्स ये, अर्लियर genetic modification could be done only in specialized labs, but now they have become very simple, they have become very easy, so more people will have access to it. Suppose let's imagine Dhananjay is our terrorist, है ना, और लेट्स थिंक ऑफ अ वायरस जिसमें मोर्टालिटी रेट ज्यादा है. कोई वायरस जानते हो ऐसा? इबोला. ओके, इबोला. वो वाला कौन सा था जो केरला में फैलता रहता बार बार? निपा. निपा ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ मोर्टालिटी. एंड लेट्स से धनंजय इज आवर टेररिस्ट. अब निपा का मोर्टालिटी तो बहुत है, बट निपा का कंटेजियसनेस उतना नहीं है जितना कोविड का था. कोविड वॉज वेरी कंटेजियस. वो एक कंट्री से शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैल गया. Dhananjay takes Nipah, does some genetic modification there, and make it as contagious as COVID. वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन, हैनोस पता नहीं क्या कर रहा था. If you are so powerful, you have watched the movie, no? अब नहीं देखने लायक. But he was so powerful, तो थोड़ा दिमाग लगा लेता, एक वायरस इंट्रोड्यूस कर देता. आके इन्फिनिटी स्टोन ढूंढ रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, सब जगह वायरस, मामला सेट. बट नाउ फॉर टेररिस्ट डूइंग दिस वुड बी वायबल, वुड बी पॉसिबल, क्योंकि दिस टूल इज इजियर टू यूज, दिस टूल इज वेरी वर्सेटाइल. और थिंग्स विच आर नॉट अलाउड, हमने बोला डिजाइनर बेबीज नहीं बनाने हैं. इस बच्चे ने, तुम्हारा क्या नाम है? वेनु. वेनु डिसाइडेड आई विल तो हैव डिजाइनर बेबी ओनली. My son is going to look like, who's your favorite actor? Samantha. Salman Khan. अब Samantha भी है ना. He would not want his child to look like Venu.
सलमान खान जैसा दिखना चाहिए, तो सलमान खान वाले फीचर्स इंसर्ट कर रहा होगा, है ना। फिर ही वुड वांट कि बाल होने चाहिए गोल्डन लंगूर जैसे, गोल्डन लंगूर वाले फीचर डाल रहा होगा। फिर ही वुड वांट बच्चा रात में चमकना चाहिए, जेलीफिश वाले फीचर्स डाल रहा होगा। दिस विल बी अ डिजाइनर बेबी। जस्ट इमेजिन वेनु ऐसा बेबी लेके रात में निकल रहा है, दिस विल बी अ डिजाइनर बेबी। बट अर्लियर दीज थिंग्स, दिस इज नॉट अलाउड राइट नाउ। बट ये किसी लैब में बैठ के क्या कर रहा है, CRISPR-Cas9 tool has allowed that. So these are some of the limitations of CRISPR-Cas9, but it has so many good applications, so many important applications. हम वो सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं। Yes. Cas9 is the cutter. हाँ हाँ, yes, 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 yes. यहाँ पे भी DNA ligase यूज होगा, या कोई और फेविकॉल टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज होगा, if not ligase, something would be used. Okay. Now, how gene therapy using CRISPR can cure cancer? थोड़ा इन चीजों को और समझते हैं। क्रिश में किया था सर काल ने, जैसे क्रिश मूवी में ये वायरस बनाया था क्या? तब तो क्रिस्पर था भी नहीं। नाउ क्रिस्पर इज देयर, इट वुड बी सो इजी। ओके, हाउ जीन थेरेपी यूज्ड क्रिस्पर कैन क्योर कैंसर। ये ना, ये मैं जीन थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट जीन थेरेपी इज, देन विल कम टू इट, गिव मी सम टाइम। लेट्स फर्स्ट गो टू some other topic. हम जीन थेरेपी पढ़ेंगे, फिर विल कम बैक टू CRISPR-Cas9, how it was used to treat cancer and all. We'll come to that. But for now, let's cover other things. Somatic cell nuclear transfer. ये क्या है? Let's understand this. Let's assume this is a egg cell. Ovum egg cell, है ना? Egg cell में this is the nucleus, and this is our cell of वेनु। वेनु का हमने कोई भी बॉडी पार्ट लिया, उसका एक सेल लिया, and this is the nucleus of venous cell. So in this nucleus we have all the genes of Venu. In this nucleus do we have all the genes of, and do we have the same genes which we had at the time when Venu was a single cell? है ना? The same genes are getting replicated in billions of cells today in Venu's body. Now if we do this, this is our egg cell. Egg cell is supposed to replicate, is supposed to multiply. Egg cell fertilize होता है, उसके बाद does it replicate? Does it multiply? But before that, let's do this. Let us remove this nucleus from here and put it here. इसके लिए हमें इसका न्यूक्लियस निकाल देना पड़ेगा ना. Let us do that. Let us take this nucleus out, put it here, and यहाँ पे make the nucleus. So now in an egg cell, what do we have? We have Venus nucleus or Venus genetic material. Now will this egg cell multiply? As this egg cell multiplies, will a lot more copies of Venus nucleus is going to get created? Using this, can we eventually create clones? वेनु का क्लोन बनाया जा सकता है ऐसे. दिस इज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर. इसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं, इसे एग सेल. तो जो नॉन एग सेल्स है, मैच्योर्ड सेल्स होते हैं बॉडी में, वो क्या है? सोमैटिक सेल. इसका न्यूक्लियर लेके एग सेल में ट्रांसफर किया एंड देन इंड्यूसिंग एग सेल टू मल्टीप्लाई. व्हेन एग सेल मल्टीप्लाइज, दिस न्यूक्लियस keeps on multiplying, keeps on increasing. These cells keeps on increasing. As this egg cell converts into a baby, this baby will have all the features which Venu has. This is somatic cell nuclear transfer.
कहाँ यूज हो सकता है? क्लोनिंग वगैरह में यूज हो सकता है। कैन इट बी यूज्ड इन क्लोनिंग? समझ में आया? तो in genetics and development biology, somatic cell nuclear transfer is a laboratory technique for creating an ovum with a donor nucleus. Ovum egg cell with a donor nucleus. Nucleus किसका है? वेनु का है. In SCNT, the nucleus which contains the organism's DNA of a somatic cell is removed and the rest of the cell discarded. At the same time, nucleus of an egg cell is removed and nucleus of somatic cell, the adult cell, is then inserted into the unnucleated egg cell. After being inserted into eggs, the somatic cell nucleus is reprogrammed by host cell and then it keeps on multiplying after getting reprogrammed. After many mitotic division in culture, this single cell forms a blastocyst, an early stage where 100 cells, around 100 cells are there with almost identical DNA to the original organism. It can be used in embryonic stem cell research or in regenerative medicine, where it is sometimes referred as therapeutic cloning. It can also be used for as the first step in process of reproductive cloning. जब हमें किसी का क्लोन बनाना है, the first step will be somatic cell nuclear transfer, SCNT. इजी सिंपल चीजें सब समझ पा रहे हैं? सर, is mitochondrial replacement therapy in pregnant women with defective mitochondria example? नहीं, we'll understand that mitochondrial replacement therapy is something different. That's not somatic cell nuclear transfer. Somatic cell nuclear transfer, please understand, हमने दूसरा somatic cell यूज किया है. Mitochondrial, वो 3-parent baby वाला concept, I'll teach you. Health में, I'll teach you what is 3-parent baby and what are mitochondrial diseases to solve them, how 3-parent babies have been allowed in UK. We'll understand it there. सबको somatic cell nuclear आप visualize कर पा रहे हो? Let's now come to biotechnology and its applications. Where will, तो इसी में हम health applications पे जाएंगे. There will study gene therapy and then we'll go back to CRISPR-Cas9, how it is being used for treating diseases. ठीक है? Biotechnology and its applications. अब देखो, application वाला part is useful for prelims definitely, but is useful for mains more. तो मेंस में इसके बाद आपको बस वे फॉरवर्ड ऐड करना पड़ेगा. इंट्रोडक्शन, वेयर इज इट यूज्ड, वो तो आप यहां कर ही रहे हो, है ना? तो जैसे आई हैव केप्ट ऑन टेलिंग पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस राइट नाउ, डोंट जंप इनटू प्रीलिम्स. आप अभी भी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने टारगेट किया है कि 31 दिसंबर तक मेंस कंप्लीट करना है, फिनिश इट. व्हेन आई हैव टॉट यू साइंस फॉर मेंस, उसमें आपने साइंस फॉर प्रीलिम्स भी पढ़ा है. व्हेन आई हैव टॉट यू बायोटेक्नोलॉजी फॉर मेंस, आपने बायोटेक्नोलॉजी प्रीलिम्स का भी पढ़ा है. ऐसे आई एम टेलिंग यू, नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करनी है, तो फिर पैनिक होकर परेशान मत हो, अच्छे से पढ़ो. व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स, यू आर आल्सो स्टडिंग फॉर मेंस. बायोटेक, नैनोटेक, रोबोटिक्स, कंप्यूटर आईटी, ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको 5 जनवरी तक पढ़ाने वाला हूं, आईपीआर, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर मेन सिलेबस ऑल्सो. मेंस में ओनली थिंग दैट विल चेंज इज, हम सारे पॉइंट्स को एक एक पेज में ले, एवरी टॉपिक विल बी इन 1 पेज ईच, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाके उसे पढ़ेंगे. न्यू स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, बट आपके लिए अरे ये तो आता है ना, क्या है ये, प्री के टाइम पढ़ा है, तो मेंस विल बी वेरी इजी. ओके, कम बैक. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. अब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह है. सॉरी, मुझे नजर लग गई लग रहा है. बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह है. इट इज इन एग्रीकल्चर, इट इज इन हेल्थ, इट इज इन एनवायरमेंट, इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इट कैन बी एट मेनी प्लेसेस. एक एक करके शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर. वी विल स्टार्ट विथ जीएम क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अब जीएम क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन हेल्प अस इन मेनी वेज. जैसे वी कैन मेक आवर आउटपुट टॉलरेंट टू एंटीबायोटिक स्ट्रेस. जैसे कोल्ड या ड्रॉट या सॉल्ट या हीट, इसके टॉलरेंट बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विल लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ जीएम रबर, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर.
रबर इंडिया में बहुत सारा केरला में ग्रो होता है, बट what scientists have done, scientists have genetically modified it so that it can grow in northeast also. नॉर्थ ईस्ट के कोल्ड कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर पाए। ऐसे ही मेकिंग प्लांट्स पेस्ट टॉलरेंट, जैसे बीटी कॉटन, वी टुक अ जीन फ्रॉम बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis एंड वी एडेड इट इन कॉटन। उससे क्या हुआ, आवर कॉटन वाज सेफ फ्रॉम अ नंबर ऑफ पेस्ट। ऐसे बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल इज नॉट यूज्ड इन कमर्शियली यूज्ड इन इंडिया, बट इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। या फिर reducing post harvest losses, after you have harvested the crop you want to increase its shelf life, you want that वो flood में बहुत ज्यादा डैमेज ना हो। GM crops can also help us do that. Enhancing nutritional value of food, एक golden rice पढ़ेंगे आज हम। golden rice में we have increased the vitamin A का availability। या फिर tailor made plants to supply alternative resources। हम एनर्जी सेक्टर में जाएंगे जब, तो देयर विल स्टडी द बायोफ्यूल्स के बारे में। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, फिफ्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स, दे यूज अ लॉट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे बायोफ्यूल्स, व्हाट आर बायोफ्यूल्स? बायोफ्यूल्स वो है जो कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस से बन रहे हैं फ्यूल्स, दोज आर बायोफ्यूल्स, जिनका रिसोर्स कहां से आ रहा है, कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट बायोगैस, बायोगैस गोबर से अभी बना होगा ना, उसमें अनेरोबिक बैक्टीरिया ने अभी काम किया होगा रिसेंट टाइम्स में, वहां से बायोगैस बना है, दैट्स अ बायोफ्यूल। इथेनॉल, इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, इथेनॉल फोटोसिंथेसिस से बना होगा प्लांट्स में, वो रिसेंटली हुआ होगा। तो कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो फ्यूल बन रहे हैं दोज आर बायोफ्यूल। तो देयर आर फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कौन से होते हैं? जो फूड मटेरियल से आ रहे हैं, जैसे इथेनॉल इज अ फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, बायोगैस इज ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल होते हैं जो जैसे लिग्नाइट या सॉरी सेल्यूलोज जैसी चीज, लकड़ी से, इन सब चीजों से जो हम फ्यूल बना रहे हैं, एथेनॉल बना लेंगे, दोज विल बी सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल इज जब हम एल्गी को, एल्गी इज अ बायोमास, एल्गी हैज मास, वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू फ्यूल, दैट इज थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ये तो तीन जनरेशन हो गई। फोर्थ जनरेशन में हम क्या करेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। जैसे एल्गी है, एल्गी को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो so that it produces lot more mass. Algae grows quickly, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई करो क्योंकि वो और ज्यादा क्विकली ग्रो करे। What would that lead to? ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस्ड, we'll be able to produce more fuel using it. तो that is an application of what? Genetic modification या biotechnology in for producing alternative resources for industries also. तो बहुत सारे advantages है, एक एक करके देखते हैं। Let's start with BT cotton. What did we do in BT cotton? एक सेकेंड, in BT cotton, what did we do? We had our cotton plant. Cotton plant was getting affected by pests. We said in pests को मारना है. There is this bacteria, soil bacterium Bacillus thuringiensis. इसमें एक जीन होता है CRY1 AC gene. It produces toxins. This CRY1 AC gene is gene for some toxins, which is not directly very harmful for us, but can kill these pests. हमने we developed seeds which are having this gene so that the plant will have this gene and this plant will produce the toxin which can kill these bacteria. तो cotton से ये बन गया BT cotton. This is GM cotton, genetically modified cotton, but we're calling it BT as
the gene that it has needed has come from where? Has come from Bacillus thuringiensis, BT. Soil bacterium Bacillus thuringiensis, BT cotton. This is BT cotton. समझ में आया? तो Bolgard cotton provide inbuilt protection for cotton against destructive American bollworm Heliothrix armigera infestations and contain an insecticidal protein from naturally occurring soil microorganism Bacillus thuringiensis. Bolgard 2 टेक्नोलॉजी में क्या है? इसमें दो जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं. Not only Cry1AC gene, but it also has Cry2AB gene, and Cry2AB gene adds to some more toxin which can kill some more pests. So it provides protection against bollworms and Spodoptera caterpillar, leading to better ball retention, maximum yield, lower pesticide cost and protection against insect resistance. अब ये चीज थोड़ा समझते हैं. देखो, Cry1AC, Cry2AB, Bolgard 1 has Cry1AC, Bolgard 2 technology used both Cry1AC and Cry2AB. It provides protection against bollworms and ये तो leading to better ball retention. जो cotton ball का retention will be better. Maximum yield. When the cotton ball is not damaged, will the cotton's yield increase? Lower pesticide cost. Now pests are getting killed naturally. So do we need to add pesticide from outside? No. So lower pesticide cost and protection against insect resistance. This is also very important part. How is it leading to protection against insect resistance? देखो, when we were using only Bolgard 1, तो वहां पे ना, when an insect is coming, it is getting killed by Cry1AC जो toxin produce करता. But suppose there are some insects which are saved from Cry1AC के toxin से. But then we also have Cry2AB. Cry2AB is killing it. So chance that this insect which is safer, which is protected from Cry1AC, they will multiply is lesser. Else this would have been the multiplication of Cry1AC से resistant pest. That will not happen. The same is the reason for, जैसे हम TB के बारे में पढ़ेंगे. Tomorrow in health we'll study about TB. TB के केस में when we treat TB, no, we give 4 antibiotics. TB का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें 4 एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. अब 1 antibiotic could also have been sufficient. Why do we give 4 antibiotics? We give 4 antibiotics for this reason कि suppose this TB bacteria is getting killed by this antibiotic. एक एंटीबायोटिक दिया, इससे TB बैक्टीरिया मर रहे हैं. 99.99% मर गए, पर 0.01% बच गए ना, who are not getting killed by this antibiotic. Now their population will increase and it will become resistant to this antibiotic. Because which gene will increase? जो इससे safe है. तो इसे नहीं, एक मत दो, दूसरा भी दो. इससे बचेगा तो इससे मर जाएगा, तीसरा भी दो, चौथा भी दो. In the same way, it will also help us when we have 2 of these toxins. It will reduce the scope of development of resistance against these pests, these pesticides or these toxins. तो जो bollworms resistance develop कर ले उसके chances थोड़े reduce हो जाएंगे. समझ में आया? Okay. But it has raised concerns also. It has raised problems also. BT cotton has raised issues also. जैसे एक water consumption has increased. BT cotton has been very beneficial. आप, मैं यहाँ पे वो details दे नहीं रहा हूँ, but 2002 में when BT cotton was introduced in India, उससे पहले we were not using BT cotton. उससे we were import dependent on cotton. अब बोला cotton which is such a common thing that we use. हम सब ने cotton आज पहना होगा, cotton से बने हुए कपड़े पहने होंगे. इंडिया में इतना कॉमन है, उस पे भी we were import dependent. But after introduction of BT cotton, because yield increased, more farmers started growing BT cotton. Production has increased, productivity has increased, and we became net exporters of cotton. 2014-15 तक ये हो गया था कि we were in a very good place when it came to cotton. तो अच्छी चीजें हुई. But we have noticed this कि एक तो water consumption has increased. Second, there is emergence of pesticide resistant pests. That is
this plant is producing various toxins, but pests have emerged which are resistant to these toxins. Resistant to these toxins means they are not getting killed by these toxins. हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे और basically scientists used to say that don't shift to BT cotton all together. आप BT cotton उगाओ पर साथ में ना थोड़ा सा दूसरा कॉटन भी उगाते रहो. But people did not listen and everyone shifted to BT cotton. तो all those pests, suppose ये एक insect है and there are 10,000 of them. Because of the toxin, most of them die. But दो चार बच जाएंगे. In the next generation, it is the genes of these दो चार, which will keep on increasing. It is the genes of these few ones which have survived, which will keep on increasing. And eventually this has happened. Now we have pink bollworm which have become resistant to these toxins, which is leading to a few years, 2 years back, Rajasthan में cotton farmers ने suicide commit किया. And Rajasthan is not a place जहाँ पे farmers suicide कर रहे होते थे. Maharashtra में we see a lot of cases, but Punjab, Haryana, Rajasthan में people are facing problems because they grow cotton a lot and cotton has started facing this American pink bollworm wala issue. Why? Because these pests have developed resistance against the toxin which is being produced. So in recent years, there have been years where we have imported cottons. हम 2014-15 तक क्या हो गए थे? We were net exporters. But पिछले कुछ सालों में there have been times when we have to depend on import of cotton. Our production has gone down. Our productivity has gone down in spite of BT cotton being there, because BT cotton भी इतना अच्छा नहीं रह गया. अब BT cotton का भी अगला वर्जन बनाया है, जो Monsanto, जो कंपनी which has produced BT cotton, no, it has developed next version of BT cotton, but that cotton has not been introduced in India. जैसे एक होता है HTBT cotton. HTBT. BT तो हमें पता है क्या है. HT is herbicide tolerant. तो समझते हैं इशू क्या है. देखो, लेट्स से दिस इज माय कॉटन प्लांट. This is my cotton plant. With cotton plant, a lot of weed may also grow, and this weed will consume a lot of nutrients from the soil. So you want to remove this weed. If we do it manually, it's very expensive. So option is herbicide डाल दो. Put herbicide. Herbicide is the chemical which will kill these weeds, but that herbicide should not be damaging our crop. वो cotton plant को damage ना करे, किसको damage करे खाली? तो उसके लिए we want cotton plant to become tolerant to herbicide. Herbicide tolerant BT cotton. Do you understand what STBT cotton is? So the company which produced BT cotton has also developed this variety, but it has not yet been introduced in India. थोड़ा resistance government की तरफ से भी है, थोड़ा resistance उनकी तरफ से भी है. There are copyright issues, there are IPR issues and other such challenges. But ये scenario है BT cotton का. बात समझ में आई? Then we have BT brinjal. Same thing. ब्रिंजल में क्या डालना? बैसिलस thuringiensis से CRY1AC जीन डालना. CRY1AC जीन किसमें डालना? ब्रिंजल में. Now brinjal will not be getting damaged. उससे ब्रिंजल का प्रोडक्शन एंड यील्ड विल इंक्रीज. इंडिया में वी विल स्टडी अबाउट अ बॉडी कॉल्ड GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी. ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है. एंड इट डस, ये आपके नोट्स में है, इट्स सब कुछ है, डोंट वरी. जब कुछ नहीं होगा मैं बता दूंगा, वहां पे लिखना. अभी समझो सारी चीजें. तो GEAC gave approval to BT brinjal way back in 2009, but a lot of protest occurred and BT brinjal के जो फाइनल अप्रूवल आता है, it has to come from Ministry of Environment, Forest and Climate Change. At that time
imposed a moratorium on BT brinjal. तो BT brinjal हमने प्रोड्यूस करना शुरू नहीं किया है, but in our neighborhood Bangladesh is producing BT brinjal. Their yield has increased, their production has increased. India has not yet done it. Why has India not done it? Multiple reasons है. एक reason ये है कि और ज्यादा तो वो एक्टिविस्ट्स है. Activists say कि नहीं, genetically modified crops are not good, but there are some other reasons also. The moment BT brinjal comes and its yield will be higher, India may have 1,000 varieties of brinjal right now. In different parts of the country, different varieties of brinjal is grown. Everyone would just shift to BT brinjal. What would that lead to? Loss of biodiversity. Also, experts say that यार इसके long term health impact क्या होंगे? We need to study that first. Then there is also this worry कि the gene modification that you have done, it may get transferred to other crops. जैसे आप hybrid बन जाता है, कई इस तरह की चीजें हो जाती है ना, तो it may get transferred to other crops also, which may create problems. And then there is issue of कि insecticide resistant varieties we may end up creating, or sorry, insecticide resistant insects may get created eventually in long term, which will become more disastrous. For those reasons, activists opposed it. For these reasons, activists opposed it. Government has also put a restriction on it. That is BT brinjal. किया क्या था? Same. इसका नाम BT brinjal है genetically modified brinjal? Yes. क्या जीन मॉडिफिकेशन हुआ है? CRY1AC जीन फ्रॉम Bacillus thuringiensis bacteria has been inserted into the crop. क्या सबको समझ में आया? What is genetically modified या BT brinjal? Okay. यहाँ पे देखो वही लिखा है, CRY1AC gene higher productivity. It cleared GEAC genetic appeals committee biosafety test in 2009, but government ने उस पे moratorium लगा दिया है. Some cases of illegal BT brinjal was observed in Haryana in 2019. ये एक important aspect है. देखो BT brinjal legally तो allowed नहीं है देश में, but BT brinjal के केस में क्या हुआ है? BT brinjal के केस में illegal BT brinjal seeds are being sold, and it has been seen that in Haryana there were cases where farmers are buying illegal seeds from the market and growing BT brinjal. ये एक और रीजन बन जाता है for allowing BT brinjal, because in the absence of regulatory allowance of this, farmer want कि उनका brinjal का production अच्छा हो, तो they may be buying BT brinjal illegally from the market, and when it is being sold illegally, some knockoff varieties may also be sold जिसका biosafety test भी नहीं हुआ हो. They may be more dangerous, or underground market for that may develop. Government का tax collection would also become an issue, है ना? इसीलिए बोला जा रहा है कि BT brinjal को शायद अलाउ भी कर देना चाहिए. Anyways, let's now go to GM mustard. GM mustard. देखो इसे मैं BT mustard इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहां पे genetic modification has not happened through Bacillus thuringiensis bacteria. That's why it's not BT mustard. इसे मैं GM mustard बोल रहा हूँ, genetically modified mustard, और धारा mustard hybrid 11. Let's talk about धारा mustard hybrid 11 और genetically modified mustard a bit. देखो DMH 11, धारा mustard hybrid 11, या फिर GM genetically modified mustard. अब फर्स्ट थिंग दैट यू शुड थिंक ऑफ इज दिस कि सर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं? ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना. हाइब्रिड इज डिफरेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड थिंग इज डिफरेंट. तो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कैसे बना, क्या बना, इसे समझते हैं. देखो फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया जो हमने खुद जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है. कॉटन, ब्रिंजल, वो मोन्सैंटो एक कंपनी है उसने बनाया. ऐसे देयर आर अदर थिंग्स दैट वी आर टेस्टिंग, वो बेयर्स कंपनी है उसने बनाया. बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया ने खुद कौन सा फूड क्रॉप बनाया है जेनेटिकली मॉडिफाई करके? इट इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11. इट इज मस्टर्ड. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर जेनेटिक रिसर्च करके एक लैब है.
उसमें उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे दीपक पेंटन. ही लेड दिस प्रोजेक्ट एंड धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वाज क्रिएटेड. पहली चीज ये. सेकेंड थिंग, what happened here, what we wanted, in reality we wanted this. हमारे पास ना इंडियन वेराइटी ऑफ मस्टर्ड है एंड हमारे पास लेट्स से एक यूरोपियन वेराइटी है. वी वांटेड देयर हाइब्रिड टू बी क्रिएटेड. वी वांटेड कि एक हाइब्रिड बनना चाहिए of these two, which will lead to increase in production. But there's a problem. What is the problem? Problem is कि जो अपना ये मस्टर्ड है ना, it is self pollinating. ये अपना पॉलन खुद प्रोड्यूस करता है एंड फर्टिलाइज कर देता है. If it was not self pollinating, then we could have got pollen from here. We could have put it here and then a seed may have emerged which has features of this and this. Hybrid बन पाता. But धारा मस्टर्ड अपना इंडियन मस्टर्ड वेराइटी इज व्हाट? सेल्फ पॉलिनेटिंग. तो सेल्फ पॉलिनेटिंग में हाइब्रिड क्रिएट करने का स्कोप नहीं है. आर वी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? तो व्हाट वी डिड, वी एडेड अ जीन हियर कॉल्ड बार्नेस जीन. बार्नेस जीन मेक्स इट मेल स्टेराइल, पॉलन प्रोड्यूस नहीं करेगा. बार्नेस जीन ऐड करते हैं हम अपने इन आवर मस्टर्ड वेराइटी. व्हाट हैपेंस? इट मेक्स मस्टर्ड मेल स्टेराइल. When mustard is male sterile, it is not producing pollens. समझ में आया? When male sterile, तो जैसे ह्यूमंस में वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करे, ऐसे यहां पे ये पॉलन प्रोड्यूस नहीं करे. फाइन. अब ऐसा हो रहा है तो नाउ कैन क्रिएट अ हाइब्रिड. टेक अ पॉलन फ्रॉम देयर, पुट इट हियर एंड क्रिएट अ हाइब्रिड. कैन नाउ हाइब्रिड बी क्रिएटेड? यस. बट जो हाइब्रिड बनेगा, it has Barnese, no, it will still be male sterile. We don't want that. Hybrid should not remain male sterile. अभी हमने male sterile बनाया so that what takes place? Hybridization takes place. That is why we want to make it male sterile. है ना? By adding Barnese gene from outside, we made it male sterile. And now we can create a hybrid. But hybrid भी male sterile रहेगा तो there would be problems. We want hybrid should be able to pollinate itself. So we said, okay, let's do this. To counter Barnese gene's function, add Barster gene here. Barster gene क्या करता है? Barnese के function को रोकता है. And now make them hybrid. In the hybrid, do we have Barnese? Yes, but we also have Barster, which will stop the functioning of Barnese. If Barnese function is stopped, will it produce pollen? But does this final thing, which is a hybrid, have outside genes, Barnese and Barster? They genetically modified भी है and hybrid भी है, and it leads to increased production of mustard. Let me know if all of us understand this. एकदम समझ जाओ क्रिस्टल. एक ना हम बस रैंडम पैराग्राफ रीड करते रहते हैं, हम समझते नहीं है कि why Barnese, Barster, why, what has happened, what is the real story behind it. Let's understand that first. मुझे बताओ कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? How this thing was created? Please let me know. कोई डाउट है बेटा? हाँ? Any doubts? No? Everyone is clear how this genetically modified crop was created? पक्का? एक बार भी आ गया? नाइस. आते अभी मैं नोट्स पे गया हूं क्या? यहां पे क्या हो रहा है ये समझ में आया? बार्नेस बार्स्टर सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना
उसमें दोनों हो ना तो बार्नेस का फंक्शन स्टॉप्ड, तो इट बिकम सेल्फ पॉलिनेटिंग, बट नाउ इट इज हाइब्रिड। इसमें देखो दोनों कलर्स है, and this scientists claim that this has what, this has more productivity. अब how much of our oil do we import? कितना वेजिटेबल ऑयल, खाने वाला ऑयल, वो क्रूड ऑयल नहीं, कि, कितना वेजिटेबल ऑयल डू वी इंपोर्ट? वी इंपोर्ट 57% ऑफ आवर वेजिटेबल ऑयल रिक्वायरमेंट। जो कुक एक्स्ट्रा तेल डाल रहा है ना आपके खाने में, उसे बोलो भाई तेरी वजह से इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट अफेक्ट हो रहा है। वी इंपोर्ट हाउ मच? 57%। 2-3 साल पहले 63% था। इवन टुडे 57% of our oil requirement is coming from where? From outside. That is why अब जब हम मैं करंट अफेयर्स आ जाने दो, वहां पे मैं आपको एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी का एग्रीकल्चर वाला सेक्शन में आई विल टीच यू अबाउट वेरियस मिशंस दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड ऑल। तो जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, हैविंग समथिंग लाइक दिस व्हिच कैन, having something like this which can increase yield by 30% can be a good thing, right? ये सबको समझ में आया? Now it is India's first genetically modified food crop. कहां पे बना है? सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इट क्रॉस्ड इंडियन मस्टर्ड कल्टीवर, इंडिया का मस्टर्ड वैरायटी जंकिया लाइन का था, ऑफ सॉरी हाँ, विथ द ईस्ट यूरोपियन वैरायटी ओरिजिन लाइक अर्ली हीरा और डोन्सकाजा। क्लेम क्या है? इट हैज 30% मोर ईल्ड। हाउ वाज दिस डन? ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इंडियन वैरायटी में हमने बार्नेस डाला, सेल्फ पॉलिनेटिंग रोका, फिर हाइब्रिड क्रिएट किया, बट बिफोर क्रिएटिंग हाइब्रिड वी आल्सो एडेड बार्स्टर देयर सो दैट पॉलिनेशन वो कैन स्टार्ट अगेन इन दी हाइब्रिड। अब why go for it? Higher production. GM crops are popular across the world. In fact, because we import oil, we are already importing genetically modified oil. तो उस नाम पे and these genes are there in the oil that we already import. बार्स्टर, बार्नीस और एक और जीन ऐड करते हैं उसमें, बार जीन, उसका पर्पस कुछ और है, we add that also. तो that's already there in the oil that we import. So saying no to this doesn't make sense for reducing import dependency, for saving forex exchange, and for keeping India scientifically relevant. Why? What is this keeping India scientifically relevant? It's this, that if our scientists will develop genetically modified biotechnology based product and we will say nahi use kar sakte, then scientists are going to get discouraged. They'll be like nahi karna mujhe India mein kaam. Yahan pe even after we do everything, what happens? It is not used, right? And that is why we should approve it. But there are criticisms also. Criticism ये होता है कि यार इसमें 3 alien genes है, बार्नेस, बार्स्टर, बार. It may be harmful, but वो criticism गलत है, because these genes are already deployed in canola and we import it freely. दूसरा criticism होता है mustard is a food crop unlike cotton. Cotton हम genetically modify use कर रहे हैं because cotton is not a food crop. But that's also not completely true. Cotton seed oil वगैरह तो यूज होता ही है ना? फिर all health effects not properly known yet. The point is कि 2009 में मोरेटोरियम लगाया था आपने 10 में. पढ़ो ना यार, 15 साल हो गए. Get to know about health effect and finalize it. Environmental damages should be studied properly first. Yield claims have been challenged by many organizations. इस तरह के कुछ criticisms भी है. In 2022, GAC approved environmental release of the 2 varieties of genetically engineered mustard.
पर्पस क्या था? एनवायरमेंटल रिलीज, लाइक यू रिलीज इट इन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एंड टेस्ट इट, बट बाद में इस पे भी स्टे लग गया है। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस, लेट्स जस्ट वरी अबाउट साइंस राइट नाउ कि वी हैव क्रिएटेड आवर ओन धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 वैरायटी। ओके, नाउ जीएम मेज, ये अभी न्यूज में था एक जीएम मेज, अब मई में थोड़ा इसको देख लेते हैं। मेज, डू वी अंडरस्टैंड व्हाट मेज इज? मक्का, भुट्टा, whatever you want to call it. What do you call it? Makka? Okay. GM maize. Confined field trials of GM maize to begin soon at Punjab Agriculture University. Field trials of GM maize. अभी इंडिया में which is the genetically modified crop which is commercially grown? BT cotton. इसका भी field trial हो रहा है। BT brinjal का भी environmental release was allowed, that was primarily for field trials. तो what are these GM maize varieties? So these are herbicide tolerant transgenic maize and insect resistant transgenic maize developed by Bayer Crop Science Limited. दो maize varieties हैं जिनका controlled environment में testing has been allowed. Which are those two varieties? One is herbicide tolerant. Did we understand the meaning of herbicide tolerant? Now when we'll put herbicide, the maize plant will not get damaged, other things will, other herbs or other weeds will get damaged. तो herbicide tolerant है और दूसरा insect resistant है. What will the study, what will the trial study? यही चीज study करेगा. Weed control efficacy in herbicide tolerant maize hybrids with the application of glyphosate K salt. Glyphosate K salt is a herbicide. तो herbicide जब हम ये डालेंगे तो अपना maize is not going to get affected. That is one thing that we'll study. दूसरा, insect protection in maize will be, इसका efficacy will also be evaluated. But इसका भी criticism हो रहा है. Criticism ये हो रहा है कि why are you studying this when glyphosate is something that is already banned? This is a herbicide which is very harmful. So why do you want to test a maize which is tolerant to it? Because this herbicide anyways you should not be using. It has cancer causing properties. This is a very strong herbicide. In environment, it's not good. तो थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है. बट देयर आर दीज टू वेराइटीज ऑफ जीएम मेज व्हिच वर इन न्यूज अभी जुलाई में. थोड़ा हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. देन वी हैव जीएम रबर. जीएम रबर मैंने आपको समझाया था. रबर इंडिया में केरला में बहुत ग्रो हो रहा है. वी वांटेड रबर टू ग्रो इन असम, नॉर्थ ईस्ट. असम में या नॉर्थ ईस्ट वाले अलग रीजन्स में देयर कैन बी वेरी कोल्ड कंडीशंस आल्सो. So our rubber should become resistant to that condition, and Rubber Research Institute of India have developed a plant tailored for climatic condition of Northeast. In fact, a rubber board research farm at Sarutari is a place in Assam, has become the world's first GM, is now sporting the world's first GM rubber plant tailored for climatic condition in the Northeast. What genetic modification was done here? तो एक MN-SOD gene होता है. Additional copies of this gene has been added in the rubber plant so that this gene will lead to it being more resistant to colder condition. MN-SOD gene के extra copies have been added. Then golden rice की बात करते हैं. Golden rice is a rice variety. It's called golden because can you see this color? वो थोड़ा yellowish color है इस rice का. Golden rice has not been developed by India. It has been developed by International Rice Research Institute. अभी नीचे हमने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है बताया है. दिस राइस हैज अ प्रॉपर्टी दैट इट हैज मोर बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन होता है, इट इवेंचुअली कन्वर्ट्स इनटू विटामिन ए. इंडिया में विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ मेजर कंसर्न, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इन साउथ ईस्ट एशिया हर जगह विटामिन ए डेफिशिएंसी इज अ मेजर कंसर्न. तो दे हैव, अब पता है ऑरेंजेस ऑल्सो हैव बीटा कैरोटीन. तो आप वो ऑरेंज कलर देखते हो ना, वो सिमिलैरिटी यहां से आपको इस रीजन से दिखेगी. तो व्हेन नाउ दिस राइस हैज मोर बीटा कैरोटीन, नाउ दिस राइस कैन प्रोड्यूस मोर विटामिन ए. If we allow its production in the country, what may happen? It may lead to vitamin E deficiency problem getting reduced. So this is an example of how nutrition, how micronutrients in food crop can be increased by what? By genetic modification. देखो, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 we have developed ourselves.
That's why वहां पे we exactly saw what happened. Barster gene, Barnase gene, Barster gene, and all. In बाकी सब में we don't have to worry about it, but we should know what is golden rice supposed to do. समझ में आ रहा है सबको? ओके देन ये IRRI क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, फैक्चुअल वाला पार्ट है, आप खुद से पढ़ लेंगे इसे. इश्यू ऑफ इलीगल कल्टीवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया है. इलीगल कल्टीवेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज दे हैव सर्टेन एडवांटेजेस एंड गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रेगुलेट इलीगल सेल. बट व्हाई आर फार्मर्स बाइंग इट? बिकॉज ऑफ बेटर यील्ड. तो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन strict action, but at the same time evaluation of all these crops to allow them or strongly ban them rather than बीच में अटका के छोड़ना. That is something there. Okay, now let's go to gene edited crops. Gene modified crops and gene edited crops में थोड़ा सा difference होता है. That's why we'll understand gene edited crops a bit. Online students, if I have missed any doubts, please एक बार भेज दीजिए. So what is beta carotene? बेटा beta carotene एक compound है which will eventually convert into vitamin A. So when we increase the production of beta carotene, एक gene जिसकी वजह से beta carotene production में increase will eventually lead to increase in the production of vitamin A. Okay. Any other doubts that I may have missed? मैं बीच में log out हो गया था अपने account से. Please let me know. Online students. Before I go to gene editing. नहीं? चलिए. Let's understand what gene edited crops are. देखो, gene modified और gene edited में एक slight difference है. Gene modified में we add a gene from some outside species. जैसे if Dhananjay was to get a gene from jellyfish, golden langur, king cobra. ये king cobra तो पूजा को मिलना था ना? Where is पूजा? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें कौन सा जीन दे? मोगली का? अरे मोगली तो ह्यूमन ही था. ओके. तो if we add a gene in Dhananjay from where? Jellyfish. धनंजय जीन मॉडिफाइड है, इसी जीन को मॉडिफाई किया है. बट धनंजय वाज वंस अ सिंगल सेल जो हमें दिख भी नहीं रहा था. हम वहीं पे जाते एंड वी वुड हैव डन सम चेंजेस देयर ओनली विदाउट इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. देन वी हैव डन जीन एडिटिंग. वो मॉडिफिकेशन नहीं, मतलब वो टेक्निकली ऐसे डिफरेंशिएट किया है उन्होंने. वी हैव जस्ट एडिटेड धनंजय's जीन. वी हैव नॉट मॉडिफाइड इट बाय एडिंग समथिंग फ्रॉम outside. This is the difference between gene editing and gene modification. तो जैसे BT cotton is gene modified cotton. BT brinjal is gene modified. Why? Bacillus thuringiensis से आ रहा है ना जीन. या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 is a gene modified crop because दूसरे बैक्टीरिया से अमाइलो लिक्विफेक्शंस, वो नोट्स में लिखा होगा ना, वहां से जीन आ रहा है. But some crops may not be modified by adding gene from outside. Those are gene edited crops. And gene edited crops do not have the same kind of regulation which gene modified crops have. उन पे इतने stringent regulations नहीं है जितने gene modified crops पे है. Because in gene modification you are adding things from outside. Are we getting this? ये difference समझ में आया? पक्का? तो this is what is written here कि gene edited crops are transgene free. बाहर से कोई जीन नहीं आया है and contain no foreign genes. Gene editing tools are used to generate changes to native genetic material to yield beneficial outcomes. Gene modified crops contain foreign genes. They leverage the genetics of other organisms to improve desired traits. BT cotton, DMH11, golden rice are such things. ठीक है. रेगुलेशन, अब देखो बोथ ऑफ देम
आर रेगुलेटेड बाय दीज रूल्स ओनली। ये 1989 के रूल्स है। मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीन एडिटेड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स 1989। बट इस रूल के कुछ प्रोविजंस है। इस रूल के प्रोविजन 7 to 11 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन जीन एडिटेड क्रॉप्स एंड thus the restrictions on gene edited crops are much lesser. And now these rules have been given by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and these rules have been issued under Environment Protection Act 1986. But ये पूरा का पूरा rule is not applicable on gene edited crops. Gene modified crops पे पूरे rules applicable हैं, gene edited crops पे some part of the rules are not applicable. Why? अब हम जीन एडिटिंग कर रहे हैं, उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। आइडिया ये है, इफ यू डू जीन एडिटिंग बाय अ मेथड which is mutating your gene in the same way in which nature में mutation possible है। आज जो मेरे जीन्स है, after 50 generation my kids may not have the same gene, some mutation may have taken place, nature में mutation occur होता है। तो if you are using a method of gene editing which is doing mutation which is similar to mutation that takes place in nature otherwise also, that kind of thing is that kind of gene editing is safe, and thus it should not face as much regulation as would be faced by when you add a gene from outside in this being. क्या हम सब समझ पा रहे हैं जीन एडिटिंग एंड जीन मॉडिफिकेशन के बीच में डिफरेंस? नाउ देखो, जैसे these are gene editing techniques, site directed nuclease 1, site directed nuclease 2. These methods are similar to what happens in nature, naturally occurring mutations, and thus by these methods when we do gene editing they have much lesser regulations. समझ में आया? ओके, नाउ एक और चीज समझते हैं। अच्छा, यहां पे ना देयर आर सम कंसर्न्स आल्सो। कंसर्न्स क्या है कि some people say that biotech industry is falsely propagating gene edited by saying it is safer, while it may be as harmful as gene modification also. Some experts who criticize gene editing, they argue this. They also say that there is a strict need of labeling and overall oversight on gene editing. अब consumer should be able to identify कि यार मैं gene edited खा रहा हूं या natural crop खा रहा हूं. And finally, genetic diversity still may get affected. Why? आप कोई gene edited variety of maize बना दो which has better features. Will all the farmers shift to that maize? तो all the different varieties of maize that exist, they may get ignored. तो बायोडाइवर्सिटी वहां पे भी अफेक्ट हो सकती है। चलो अब जीन एडिटिंग का ना एक एग्जांपल देखते हैं, जीन एडिटेड मस्टर्ड व्हिच हैज बीन डेवलप्ड। अब हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? हाथ उठा लो खाली, वैसे ओके इतने लोग नॉर्थ इंडिया मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल तक, ये पूरा नॉर्थ इंडिया बोल रहा हूं। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं दे मस्ट हैव कंज्यूम मस्टर्ड ऑयल कॉमनली, है ना? मेरे घर में खाना बनता है तो मतलब घर में, यहां नहीं, यहां तो घर कहाँ है ना? नहीं, यहाँ पे तो जो कुक बना देता है, जो मेरे घर में खाना बचपन से मस्टर्ड ऑयल में बना है, वो वाला सिचुएशन होता है। बट मस्टर्ड ऑयल इज नॉट समथिंग दैट पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया वुड लाइक। दे लाइक व्हाट इज दैट स्मेल ना? जैसे मेरे को कोकोनट ऑयल में खाना देता, हम लाइक ये क्या है, व्हाट इज दैट स्मेल, isn't it? But not everyone likes mustard oil because mustard has that pungent smell. सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी नहीं खाते हैं। अब आप बोलोगे सर नहीं सर, मस्टर्ड ऑयल से जो केक निकलता है, ऑयल निकालने का, वो तो हम जानवरों को देते, वो ना आपको भूसे के साथ मिक्स करके देना पड़ता है। यू मिक्स इट विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, यू कैन नॉट मेक एनिमल्स ईट इट जस्ट लाइक दैट। इट इज बिकॉज ऑफ मस्टर्ड सीड हैविंग high level of glucosinolates. What do mustard seeds have? High level of glucosinolates. जैसे people in Gujarat, I think वहां पे peanut oil ज्यादा यूज होता है ना? peanut oil। महाराष्ट्र में what is peanut oil?
या पीनट बोल रहा हूं मैं, पीनट सही है ना, ग्राउंडनट पीनट, यस यस, ग्राउंडनट पीनट, दैट ऑयल इज यूज्ड, या फिर सनफ्लावर ऑयल इज यूज्ड, है ना। इफ यू गो टू साउथ इंडिया, ये सेम ऑयल और एंड देन कोकोनट ऑयल ना, मैं कोकोनट ऑयल तो सिर पे लगाते हैं, है ना, बट फिर वो लॉजिक हम मस्टर्ड ऑयल में भी लगाते हैं, वहां नहीं लगाते, बिकॉज वी आर यूज्ड टू ईटिंग मस्टर्ड ऑयल, नो, वी डोंट अप्लाई दैट लॉजिक। तो वी आर यूज्ड टू अ वे ऑफ लाइफ। इससे ना एक और चीज समझो कि ना, whenever you feel like the other way is inferior, please understand it is just this way you're used to. So never judge, look down upon anyone just because the other person is different. You're not superior. आपको पता है ना, पूरे यूनिवर्स में तुम सरसों तेल खाते हो या नारियल तेल खाते हो, उसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कल अर्थ में ब्लास्ट हो जाए, अर्थ बीच से फट जाए, तो सोलर सिस्टम के बाहर कुछ जाएगा भी नहीं। नो वन इन द यूनिवर्स इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय दैट। तो बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर इंफीरियर सोच के हवा में नहीं रहना। डोंट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज इंफीरियर, क्या मुकेश अंबानी के पास तो ये है, मेरे पास क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बी हैप्पी, कमिंग बैक टू, तो डोंट जज एनीवन कि यार ये क्या खा रहे हैं, कैसी स्मेल आ रही है। समटाइम्स आई हैव सीन पीपल, जैसे ना कभी कोई ड्राई फिश बनती है, ड्राई फिश से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, आई ऑल्सो फील दैट। मैं बचपन में बोलता ये क्या है, अड़ोस पड़ोस में, बट देयर आर पीपल हु आर यूज्ड टू दैट स्मेल एंड दैट्स वेरी टेस्टी। मैं नाक बंद करके कभी कभी खाया हूं, बट अगेन मैं मजाक बना रहा हूं उस चीज का, बट ना किसी को मस्टर्ड ऑयल पसंद है, कैसी बात कर रहे हो। बट व्हाई दैट पंजेंट स्मेल? दैट पंजेंट स्मेल इज because of this compound called glucosinolates, a group of sulfur and nitrogen containing compound contributing to the characteristic pungency. And because of this, mustard oil ना बहुत सारा एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाता है। यूएस में there are states where mustard oil cannot be sold as vegetable oil. There are some states where mustard oil cannot be sold as vegetable oil. Indians, वो नॉर्थ इंडिया वाले जब जाते हैं, उन्हें मस्टर्ड ऑयल में कुछ बनाना है, फॉर मी मटन हैज टू बी कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। ऐसे मेरे जैसे दो चार लोग होंगे यूएस में, दे गो एंड बाय मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम द शॉप। कैसे? ये बॉडी पे अप्लाई करने वाला ऑयल है, बिकॉज इन फूड दैट्स नॉट अलाउड इन सम स्टेट्स। And there are other reasons also. Will some health make, maybe if we'll get time we will talk about that. We'll understand that, है ना। बट इट इज बिकॉज ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स। अब ग्लूकोसाइनोलेट्स वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था, तो साइंटिस्ट डिड दिस, ले ग्लूकोसाइनोलेट प्रोड्यूस ही नहीं होने देते इतना, दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, reduce the production of glucosinolate in the plant. We can do it by genetic modification or we can do it by genetic editing, but it created other problems. How many of you have seen mustard का cultivation around you? No? जैसे राजस्थान हरियाणा वगैरह में तो बहुत कॉमन है, मेरे घर के पीछे मस्टर्ड उगता है। अब ना मस्टर्ड का जो प्लांट होता है ना, मस्टर्ड के प्लांट को एनिमल्स आके खाते नहीं है। जब वो छोटा रहता है तब खा लेंगे, तब अपन भी तोड़ के साग बना लेते हैं, सरसों का साग। सरसों का साग कम्स फ्रॉम द प्लांट व्हेन इट इज वेरी स्मॉल, बट एज इट बिकम्स बिग उसका लीफ भी नहीं खाने आते कोई, बिकॉज द लीफ हैज अ लॉट ऑफ ग्लूकोसाइनोलेट्स। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट बिकॉज इट हैज ग्लूकोसाइनोलेट्स। तो द मोमेंट साइंटिस्ट डिड दिस, they developed a variety of mustard which produces less glucosinolate. It started getting damaged, pest attack, animal attack, so we could not release glucosinolate, reduce. So now what we had to do, we had to reduce glucosinolate in the seeds. Leaf में रहे, seed के pod में रहे, but it should not go where? To the seeds. Because oil that we extract is from the seed. If it has lesser glucosinolate, our things are resolved. This was done by gene editing. What we did, there are these genes, glucosinolate transport gene. अब देखो,
glucosinolates are synthesized in leaves and pod wall of the mustard plant, and they are transferred to seeds with the help of products produced by these genes. There are 12 such genes under two distinct classes of GTR1 and GTR2. Scientists at NIPGER, the lead lab of CGMCP, have edited 10 out of 12 GTR genes in the Varuna, a high-yielding variety of Indian mustard. They used the help of CRISPR-Cas9 for doing this editing. And after that, we have created a variety of mustard which is producing a lot of glucosinolate, but it is not getting transferred to the seeds. So seeds don't have glucosinolate, or has but in much smaller quantity, and thus it is palatable, it is eatable. Plus at the same time, leaves and plants have it, so it is protected from animals, it's protected from pests. So GTR edited low seed high leaf glucosinolate, seed में low but leaf पे high, resistance against pest is intact. This is an example of how gene editing can be useful. ऐसे अभी न्यूज में था जीन एडिटेड राइस वेराइटीज, दो राइस वेराइटीज हैं, DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1. In May 2018, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare have released these two gene edited rice varieties. What are the advantages? Better yield, better protection from drought and salinity, less water usage, less greenhouse gas emission. Less water usage होगा तो by default greenhouse gas emission reduces. It is water, when the field is filled with water, that anaerobic respiration takes place and methane is produced. So less greenhouse gas emission thus will take place, and it has potential to herald second green revolution. ये अगर if this rice varieties are successful, and they have been developed in India. एक Indian Institute of Rice Research in Hyderabad has developed DRR rice 100, and Indian Agriculture Research Institute New Delhi has developed the Pusa DST rice 1. Some concerns have been raised. They say that gene editing sometimes may be problematic. उसमें what if wrong changes are being made? What if its health impact comes to be? जो अपन ने we have already seen gene edited varieties को भी criticize किया गया है. That may those criticisms exist here also. Okay. तो this was gene modification and gene editing. अब before we go ahead, एक छोटा सा hybrid ये reduced height varieties, hybrid wheat varieties के बारे में थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा जान लेते. But before that, let's just go through all the examples that you have seen and just see if you are able to understand everything or not. अपन ने genetically modified crops और gene edited crops में जो सारी चीजें पढ़ी हैं, एक बार देख लो and see if we are able to understand everything. एक मिनट बेटा. हाँ बच्चा बताओ. Transgenic means genes have come from somewhere outside, so genetically modified. Dheeraj is asking which oil is good for cooking, sir. बेटा अगर यूपीएससी ऐसे सवाल पूछने लगेगा तो मैं पढ़ लूंगा, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं. आई ओनली स्टडी थिंग्स विच आर रेलेवेंट फॉर एग्जाम्स. बाकी मेरे कुक डिसाइड करते हैं, वो जो ले आते हैं और वो ही गिव्स हिज ओन रीजन. समडे ही विल गेट मस्टर्ड, तो भैया इस बार ना मटन बनाएंगे, मस्टर्ड ऑयल काम आएगा. समडे ही विल ब्रिंग ऑलिव ऑयल. बोले भैया मैंने सोचा आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है. मैंने कहा भैया अगर हेल्थ इंपॉर्टेंट लगती है थोड़ा कम डाल लिया करो. भिंडी फ्राई में भिंडी कम तेल ज्यादा, तो तेल कम खा लो, कोई भी खा लो, मुझे पता नहीं ज्यादा है ना वो. चल बाकी आई विल टॉक अबाउट सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, वो सारी चीजें इन टुमारोज क्लास. जैसे हम हेल्थ पे आते हैं देयर विल डिस्कस दिस.
सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट। हो गया तो आई विल गो अहेड। बंद करवा दे। प्लीज आगे वाला एसी भी बंद कर दीजिएगा अगर कोई सुन रहा है तो। डन, एनी डाउट्स? नो, आई एम अज्यूमिंग सबको बायोटेक समझ में आ रही है, सब सारे आंसर्स कर पाएंगे एग्जाम में, है ना? समझ में आ रहा है पक्का? शुड वी गो अहेड? यस। सब लोग प्लीज शांत रहेंगे। जय श्री राम। और वॉट एवर गॉड यू बिलीव इन, अल्लाह अकबर, हेल मदर मैरी एंड जीसस, and whatever like I do not want to impose any views on you, है ना? In the test do जय श्री राम, मतलब नहीं नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, इफ यू आर श्योर अबाउट टू स्टेटमेंट्स एंड थर्ड स्टेटमेंट आपको पता नहीं है और उसकी वजह से यू आर हैविंग डाउट्स बिटवीन टू क्वेश्चंस, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट इन द सेंस सोच लो अपना बेस्ट। फिर भी अगर एक ही स्टेटमेंट की वजह से क्वेश्चन रुका हुआ है, अटेम्प्ट इट। राइट नाउ यू मे हैव, ये वाला बंद कर दीजिएगा, राइट नाउ यू मे हैव doubts, but with time, as you revise more, if you have a habit of attempting more questions, and as you keep revising, your accuracy will improve. As you keep revising, your accuracy is going to improve. As you keep attempting these questions, your ability to apply techniques, यार ये तो extreme statement है, this kind of statements will improve. Initially अभी ना you are very far away from your exams. Every Sunday आपको टेस्ट देना है। अभी आई थिंक ओनली अ फ्यू टेस्ट हैव बीन कंडक्ट, टोटल 70 टेस्ट आपको देने हैं। मे बी यू हैव गिवन 15 टेस्ट सो फार, बैच 2 में तो उससे भी कम हुआ है ना? तो इट विल कीप इंप्रूविंग। इफ इन अ क्वेश्चन यू नो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, इफ यू डोंट नो वन और टू, अटेम्प्ट करके आओगे। अभी यू मे बी मेकिंग मिस्टेक्स, डोंट वरी, विथ टाइम दिस इज गोइंग टू चेंज। इनिशियली एज अ राइट नाउ यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब हमने स्पेस पढ़ा था, न्यूक्लियर साइंस टेक हमें इतने अच्छे से नहीं आता था, तो स्पेस के सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बहुत समझ में नहीं आते, क्या चल रहा है सन में एंड ऑल। बट विथ न्यूक्लियर साइंस टेक वी आर एबल टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स, विथ बायोटेक वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स। तो जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, and keep attempting the tests and attempt as many questions as possible. Abhi to at least in current the mini tests you should all attempt all 50 questions, because they're making questions from where? Notes में से। या तो you have read those topics. I personally feel कि आपने अगर कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आओ, because you may right now not be able to recall those points, but ना जब आपने पढ़ा हुआ है ना, and when you are attempting, there is something in your head somewhere, you will, जो आप तुक्का लगाओगे ना, there are chances that it will go right. मैं आज से 15 साल हो गए, शिट, मतलब 15-16 साल पहले मैं आईआईटी जेई की कोचिंग करता था, मतलब मैं पढ़ता था। क्लास 12 के बाद आई टुक अ ईयर्स ड्रॉप। वहां पे ना एक मेरे केमिस्ट्री के सर थे, संवित बिस्सा। आई यूज्ड टू स्टडी इन बंसल क्लासेस, कोटा में। इट वाज द बिगिनिंग, हाँ, इट वाज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन देयर। आई यूज्ड टू स्टडी देयर, एंड एक संवित बिस्सा सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ही टोल्ड मी दिस एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल। ही सेड कि यार, जब तुम अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना और तुम्हारा मन किया कि ए आंसर है पर तुम श्योर नहीं हो, बाद में उसे चेंज मत करो, ए मार के। बिकॉज वो ए आया कहां से? वो ए आया है आपके पूरा जो स्टैटिक नॉलेज था वो सब यूज करके ए आया था देखते ही, फिर आप ओवर थिंक करके उसे गड़बड़ करते हो। उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला था, वो आजकल ट्रेंड में ज्यादा है, बट भगवान का नाम लो, जय माता दी,
और वॉट एवर भगवान यू बिलीव इन, एंड मार दो, बी पॉजिटिव करके आओ। जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसमें भी रीड एवरी स्टेटमेंट केयरफुली। Suppose they consider the following statements about appa jappa jappa, and you don't know anything about appa jappa jappa, but still consider the statements. In this model, every citizen is going to become a billionaire. Abbe. Whatever the model is, this is going to be wrong, right? So usse you can still eliminate, but the topic if you have studied, उसको तो छोड़ना नहीं है, उसको हमें अटेम्प्ट करना है. You will see with time your accuracy is going to improve, and your ability to attempt these questions is also going to improve. ठीक है, मैंने ये रिवाइज करके क्वेश्चन पूछने को बोला था, तुम स्ट्रैटेजी क्वेश्चंस पूछ रहे हो. रुको, और बायोटेक में जो अभी तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो बताओ. नहीं, चलो लेट्स गो अहेड. हाइब्रिड वीट वेराइटीज एंड रिड्यूस्ड हाइट जीन्स को थोड़ा समझते हैं. रिड्यूस्ड हाइट जीन्स एंड हाइब्रिड वीट वेराइटीज. देखो, व्हेन green revolution occurred, it was made possible by high yielding wheat varieties. तो इशू समझते हैं. Let's say this is my wheat का plant. This is my wheat ka plant. It used to have a few grams of grains at the top. But when we got new varieties of wheat, क्या उसमें grain production बढ़ गया था? Yield increase हो गया. तो if the amount of grain here increases, will there be higher chance of this plant falling? अगर top पे if you increase the weight, will there be higher chance of this plant falling? Right, this is what was happening. This was further leading to damages. So scientists look for reduced height genes. Plants में भी कई plants ऐसे, कई wheat के plants ऐसे होंगे which will be of reduced height, and they promoted those reduced height genes. So this plant will have lesser height and more weight at the top. This is more stable. Do we understand this? Now there are other advantages of this. अब ऐसे सोचो, when it is extracting nutrition from here, a lot of nutrition is going in this part of the plant, but here when it is extracting nutrition, because its stem is smaller, less nutrition is going there. Most of it is going in the seeds. So reduced height genes made hybrid high yielding wheat varieties possible. Is this making sense to all of us? Pakka? Sure. But these reduced height genes also create some problems. क्या problems है ये समझते हैं. देखो, the genes which reduce my height will also reduce a lot of things. जैसे suppose below earth, I'm sowing my seed. Seed से the plant will emerge. तो जो initial emergence वाला component होता है, that also reduces in size, and thus you are not able to sow seed deeper because it will not be able to emerge. देखो, when ऐसे समझो कि एक हाथी का बच्चा है, वो शुरू में ही बड़ा होता है ना, क्योंकि हाथी बड़ा होगा. बट एक खरगोश का बच्चा है, वो शुरू में बहुत छोटा होता है, बिकॉज खरगोश. तो ऐसे अ प्लांट which is going to be of smaller size, will its kid also be smaller? Right? So these seeds have to be sown at the top. They cannot be sown deeper. जैसे stubble burning वाला एक problem, how can we resolve? Let the stubble be there in the field
and sow the seed. We won't be able to do it with this wheat because the plant will not be able to emerge from the stubble. So scientists are looking for other reduced height genes which will ensure कि while the plant का size reduces, but initial जो emergence है उसका उसका height doesn't reduce. So there are many reduced height genes. Initially reduced height gene 1 was used. Scientists are exploring other genes also. India, maybe this research is going on and this thing keeps coming in news again and again. Let me take you here. 1960s में green revolution हुआ and reduced height genes have increased global yield. The high yielding wheat variety developed by Borlaug, which required higher use of fertilizer and pesticide, produced bigger grains. However, the heavier grains caused the plant to become unstable and they were prone to lodging. Therefore, Borlaug introduced dwarfing gene into wheat, giving plants a stronger, shorter stem that resisted lodging. 21 reduced height genes in wheat, RST1 to RST21, have been described so far. जो in India, जो semi-dwarf varieties which are available or which were explored during Green Revolution, they carry RST1 dwarfing alleles and produce optimum yield under high fertility irrigation conditions. But there are problems. ये जो RST1 जीन हमने यूज किया जिससे we have reduced the size of plant, उसकी problems है. Problems क्या? Dwarf wheats are not well adapted to deeper sowing condition. We understand the reason for it. This is due to shorter coleoptiles. Coleoptiles is the initial part which is protected, and low early vigor often result into reduced seedling emergence. Seed is not able to emerge. Further, shorter coleoptiles lead to crop residue, posing a problem for seed emergence. These wheats also don't work in drought conditions. Drought conditions में you would want to go deeper in the soil to get moisture. They won't work there. They will fail to reach the surface of the. If you sow it deeper, they'll be failing to reach the surface of the soil. So scientists are exploring other genes. जैसे RST14 and RST18 are being explored. These genes are associated with better seedling vigor and longer coleoptile. So initial seedling vigor will be higher, coleoptile will also be bigger, but overall plant size will be shorter. ऐसे ही here you will see RST13 has also been in news for these reasons. हमने पूरा स्टोरी बताया so that एग्जाम में RST12, RST13 were in news recently. What are these about? You'll be like, हाँ पता है हमें क्या है. Yeah, they may ask you. Borlaug varieties, yeah, these terms were in news. What are they about? You should be able to answer them. क्या सब लोग comfortable है इससे? Okay. Let's now go to biotechnology's application in medicines. है ना? हेल्थ सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को समझते हैं. हेल्थ सेक्टर में एक तो वैक्सीन्स है. वैक्सीन्स वी विल स्टडी इन अ लॉट मोर डिटेल टुमारो, वेयर विल टॉक अबाउट वायरल वेक्टर वैक्सीन, वेयर विल टॉक अबाउट अटेन्युएटेड वैक्सीन. जैसे अभी कोवैक्सीन के केस में हम क्या करते हैं? कोवैक्सीन के केस में हम कोविड वायरस ही आपकी बॉडी में डालते हैं. कोविशील्ड के केस में हमने कोई एडिनो वायरस लिया है, उसके अंदर कोविड का आ रहे हैं, तो ये कल डिटेल में पढ़ते हैं. बट वैक्सीन डेवलपमेंट तो बेसिकली ना, एक्चुअली आई शुड नॉट हैव स्टार्टेड लाइक दिस. जनरली व्हेन आई टीच दिस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, में मैं एक पैटर्न रखता हूं कि यार हेल्थ सेक्टर में किसी का भी एप्लीकेशन पूछा जाए, बीट ऑफ नैनोटेक, बीट ऑफ रोबोटिक्स, बीट ऑफ बायोटेक, बीट ऑफ कंप्यूटर आईटी, किसी का भी पूछे हेल्थ सेक्टर में एप्लीकेशन बताओ, तो हेल्थ सेक्टर में किसी भी का भी एप्लीकेशन 3 टाइप का होता है. प्रिवेंटिंग अ डिजीज, डायग्नोजिंग इट एंड ट्रीटिंग इट. प्रिवेंशन में ऑल्सो मीन न्यूट्रिशन अच्छा कर देना, हाइजीन अच्छा कर देना और वैक्सीन बना देना. These are prevention component. So preventing a disease, diagnosing it and then treating it. तो जनरली ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए. बट प्री में बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन साइंस टेक, वी फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट्स. लेट्स लुक एट इट. पहले वैक्सीन तो हमने देख लिया, समझ लिया. लेट्स गो टू अदर थिंग्स. मास प्रोडक्शन ऑफ अदर थेराप्यूटिक ड्रग्स. हमें मेडिसिन बनानी है, उसका मास प्रोडक्शन. डिड वी सी पेनिसिलिन?
पेनिसिलिन के मास प्रोडक्शन में वर वी यूजिंग बायोटेक? यस, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग. Let's think of insulin. Insulin is a very common medicine that we use. We'll study about insulin in more details in tomorrow and day after tomorrow's class when I'm talking about health. मैं आपको डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज सब पढ़ाऊंगा ये कल और परसों की क्लास में. ये इसलिए I'm trying कि today we are finishing biotech as much as possible because health is bigger. हेल्थ में बहुत सारे डिजीजेस हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स है, ये सारी चीजें हम हेल्थ में कवर करते हैं. तो इंसुलिन इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? पैंक्रियास में. The beta cells in pancreas, they produce insulin. In the past, insulin for human use was extracted from pancreas of other animals. Pigs नहीं, कोई भी एनिमल, मतलब ज्यादातर मैमल्स प्रोड्यूस करते हैं. तो पिग्स थे, काउस थे, बफलोस थे, इनके पैंक्रियास से क्या लेते थे? इंसुलिन लेते थे. बट वहां पे प्रॉब्लम थी, उनके पैंक्रियास में उनके खुद के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जर्म्स हैं. Their body has those things, right? Those microorganisms, those germs आप अपने ब्लड में इंजेक्ट नहीं कर सकते ना. When so it used to create infections for humans also. So we were like, why do that? Let us get it manufactured. ये होता है इंसुलिन. This is how pro insulin looks like. बाद में तो it has A peptide, A peptide, B peptide and this C peptide. We said इनका जीन निकालते हैं, put them in some E.coli bacteria, let that bacteria produce these components and then we'll extract it from there. समझे? इससे एसोसिएटेड जो जीन है, take it out from our body, take it out from humans, put it in some microorganism, let that microorganism grow and multiply. Will they be producing a lot of insulin? वहां से एक्सट्रैक्ट करो और बेचो. अब क्योंकि हमने we have understood how genetic modification work, will it be viable? Will it be possible? That is how we are able to produce this medicine or other things also. अब दूसरी चीज समझते हैं. देखो, when you must have seen a lot of people are lactose intolerant. वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज एनिमल जो काउ जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, that protein may not be suitable for us. In fact, you would also notice this कि बच्चों को जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उन्हें बोला जाता है कि फर्स्ट 1 साल तक काउ का मिल्क नहीं देना है. वेरी रिलीजियस पीपल में से काउ का मिल्क बेस्ट होता है, मां के दूध से भी अच्छा होता है, काउ माता है और वो सारी चीजें. बट काउ इज सम अदर स्पीसीज. Respect it, value it, but it is some other species. And the protein it requires may not be the protein that we need. But दूध पीना तो has become integral in our culture. So why can't we create genetically modified cows which produce milk, which produce protein, which are suitable for humans? These kind of things have also been done. समझ में आ रहा है? I'm sorry. Then we have gene therapy. We're talking about what? We're talking about application of biotechnology in the health sector. Application of biotechnology in the health sector. पहले हमने वैक्सीन की बात करी, फिर हमने बोला कि कैसे medicines can be produced in large quantity with the help of biotechnology. Let's now understand what gene therapy is. Gene therapy and its application. अच्छा, forget gene therapy. What is therapy? Cure, treatment, है ना? There are some diseases जिसके लिए ना treatment और medicines may not be available because the origin of those diseases are in your genes. आपके let's say आपके pancreas में some mutation has occurred, और या आपकी body में some mutation has occurred and some genes which were supposed to get expressed in pancreas, those have been mutated. तो आपके pancreas में वो gene right kind of protein नहीं बना पा रहे because they have mutated.
and which is causing problems. From outside you can keep giving whatever medicine you want, but the pancreas will keep producing a harmful protein, a protein which may not be suitable. So what is the solution that you have? Solution is आप वहां पे जीन मॉडिफिकेशन करो, नॉट ऑफ द एंटायर ह्यूमन बीइंग. मेरे स्पर्म में जीन मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा तो मेरे बच्चे को जीन नहीं जाएगा, बट मेरे पैंक्रियास में जाके जेनेटिक चेंजेस लाओ. वी डू इट थ्रू जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स. दैट इज जीन थेरेपी. जीन थेरेपी किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए you are bringing changes in the gene, that is gene therapy, and it is done through tools known as gene therapy products. समझ में आ रहा है? नहीं? नहीं. देखो, अच्छा एक और स्क्रैच से समझते हैं. जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफिकेशन, जीन थेरेपी, इनको थोड़ा जीन मॉडिफिकेशन और जीन थेरेपी को अलग से समझते हैं. ऐसे समझो, व्हेन आई वाज एन एग सेल, सिंगल एग सेल, एक न्यूक्लियस था, वहां पे काले बालों की जगह गोल्डन बालों वाला जीन डाल दिया जाता. अब वही एग सेल मल्टीप्लाई होगा, उसी से बाद में मेरा स्पर्म भी बनेगा. व्हाट जीन विल माय स्पर्म हैव? गोल्डन बाल. Can those genes get transferred to my children also? Yes, because it is that sperm which is going to fertilize mother's egg. ये समझ में आ रहा है? But suppose I do this today. I go to a doctor, I say, doctor, ये जो है ना, ये part, hair is not being produced by my heart, my lung and everything. I want कि ये वाला part है ना, यहाँ पे जितने भी cells हैं, you bring changes in them and introduce which gene? Golden langur. So will my sperm change? This is not a disease that I'm treating, but this would have been gene therapy. That would have been gene modification. Are we understanding the difference here? जीन मॉडिफिकेशन, जीन थेरेपी के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जीन एडिटिंग वही होता, मतलब कोई बाहर से जीन इंट्रोड्यूस नहीं होता, बट मेरे सिंगल एग में क्या कर दिया जाता? सम एडिटिंग वुड हैव बीन डन. So that gene editing also gets transferred to my children. वहां पे जीन गेट्स मॉडिफाइड इन द इंटायर बॉडी. Now we are able to understand gene modification. Gene थक गए क्या सब लोग? इतनी जल्दी कैसे थक गए? आज बोरिंग क्लास हो गई, ज्यादा ज्यादा हो गई, हैवी हो गई, हैवी हो गई ऐसे? तो मैं डांस वांस करके दिखाऊं? क्या टाइम हो गया? अभी 10 मिनट और पढ़ लेते हैं, या छोड़ दे क्या अभी? आज 40 मिनट के लिए? बेटा आज पढ़ना ज्यादा है, तो आज चलो 40 मिनट्स के लिए छोड़ता हूं, बट फिर 7:30 तक पढ़ेंगे, है ना? 5:30 to 7:30 पढ़ेंगे, है ना? जाओ, खुशियां मना लो, रिलैक्स हो जाओ. विल कम बैक एंड विल स्टडी फॉर 2 more hours. ओके, चलिए. वेलकम बैक एवरीवन. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया. क्या खाया? हाँ, वड़ा पाव. वड़ा पाव कहाँ मिल गया? कहाँ मिलता है? मैं सोच रहा हूँ नीचे चाय की दुकान भी खोल लेता हूँ, है ना? ऐसे 5 बजे तक पढ़ाऊंगा, 5 बजे नीचे चाय बेचने चलूंगा. बेस्ट. हाँ, मेरा किचन है. पढ़ लो. चलो, अशु, अभी कोई डाउट? अभी तक जो पढ़ा है, एनीवन, एनी डाउट्स? नो? बोलो बोलो. आप बताते हैं, जीन थेरेपी दोबारा समझाता
बिफोर जीन थेरेपी कोई डाउट है? जीन थेरेपी आई विल स्टार्ट अगेन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो? अदर देन जीन थेरेपी एनी अदर डाउट्स? नो? ओके। तो देखो, जीन थेरेपी इज अ मैकेनिज्म टू ट्रीट डिजीजेस। थेरेपी है तो टू ट्रीट डिजीजेस by introducing or modifying existing genes. Now, a question that all of you are having is, sir, how is gene modification? Like, are we creating genetically modified organism through gene therapy? So no, not necessarily. Genetic modification में the genes everywhere in your body is modified. Whereas in gene therapy, only the part which is affected, वहां पे gene changes may happen. When we wanted that I have golden hairs, golden langur wale. So I said when I was a single cell, at that time, someone would have gone into the nucleus and would have introduced which gene? The gene from golden langur. Then what would have happened? The same cell would have multiplied. It would have become 2, 4, 8 and so on. And eventually the cells of my head hair would have also had those genes which has genes of golden langur leading to golden hairs. तब वो जीन मॉडिफिकेशन होता। जीन मॉडिफिकेशन also gets propagated to next generation. Where is gene editing? Gene editing, gene therapy may involve changes in some cells, the cells which are affected. It's not going to change all my cells, and thus it is not necessary that these changes will be propagated to my next generation. Here, do we use gene editing mechanism? Yes. But rather than using it in the beginning cell, we use it in the matured cells. Now, are we able to understand the difference between gene editing, gene modification or gene therapy? Gene therapy में gene editing may be used, but only the affected region में changes may occur. Do we all have clarity on this now? You had that doubt? You are clear? Anyone else who had this doubt? We understand that? Now, we achieve gene therapy by tools known as gene therapy products. So we may talk about biolistic guns or other such mechanisms to bring changes in the genes. All those things are called gene therapy products. So for gene therapy, the mechanisms which are developed are gene therapy products. ये भी easy है, simple है. So here you will see we have used a viral vector wala mechanism. In the vector, we have inserted the gene, and then this vector is made to go inside the cell. It may go inside the nucleus, and there this new gene, suppose our gene is defective and we are not able to function properly, so this new gene which is coming from outside will make sure that it is the defective gene is not able to make the product, it is able to make the product, and now our disease is treated. Are we getting? So gene therapy refers to process of introduction, removal or changes in the content of an individual's genetic material with the goal of treating a disease. एक example है 𝐂𝐤𝐧𝐬. It is name of a gene therapy which has been approved by UK for treatment of sickle cell anemia. I'll talk about sickle cell anemia in a lot more detail. वहां पे I'll explain you this also. Now, gene therapy products are the methods by which we deliver nucleic acid. Nucleic acid क्या है? Deoxyribonucleic acid या ribonucleic acid DNA RNA का components. So genes which deliver DNA components या RNA components by various means for therapeutic benefit, for health benefits. They include entities that are used for things like gene augmentation, you are adding some gene editing, gene silencing, synthetic or chimeric gene augmentation, and so on. Gene therapy products may do all these things. देखो यहाँ पे gene augmentation you understand, gene editing you understand, gene silencing you understand.
जीन साइलेंसिंग के लिए भी सम जीन थेरेपी में भी यूज्ड। देन सिंथेटिक और काइमेरिक जीन ऑगमेंटेशन। काइमेरिक जीन ऑगमेंटेशन में ऐसा होता है कि दूसरी स्पीसीज ह्यूमंस में ना दूसरे एनिमल्स का जीन इंट्रोड्यूस कर, इस तरह की चीज हो जाएगी। या आज हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर भी पढ़ेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज को टारगेट करना। एक्चुअली काइमेरिक में केस में क्या होगा ना, सपोज देयर इज अ डिजीज, देयर इज अ कैंसर सेल, our immune system is not able to fight that cancer cell, so we will take some cells of our immune system, we will modify them in such a way that they'll be able to target the cancer cells and then we will insert them back. CAR T cell therapy में ये होता है। तभी हम chimeric antigen receptor and those things CAR T cell therapy को डिटेल में पढ़ते समझेंगे। But all these are what? All these are methods by which gene therapy may be achieved. अब what are the advantages? एडवांटेज में ऐसा है कि यार जेनेटिक डिजीजेस का ऐसे तो देयर इज नो ट्रीटमेंट, बट हियर परमानेंट ट्रीटमेंट मे बी अ पॉसिबिलिटी। मेडिसिन्स वाज नॉट सॉल्विंग द पर्पस, बट व्हेन यू ब्रिंग चेंजेस इन द जीन्स ओनली, दोस सेल्स जहां चेंजेस हुए हैं, दोस सेल्स व्हेन दे रेप्लिकेट देयर, व्हाट वुड हैपन? द मॉडिफाइड जीन्स वुड बी देयर and thus a permanent solution may be a possibility. Gene therapy is also only option for treatment of several genetic diseases. India has one of the highest burden of genetic diseases, and worldwide the market for genetic diseases is also improving. India is a capital for medical tourism. India is among, like Africa में चले जाओगे, आप West Asia में चले जाओगे, a lot of people come to India for medical tourism purposes, for medical treatment purposes, and we should have gene therapy services available. That's for that we need to develop gene therapy products. To promote this, in 2019, ICMR had also come up with national guidelines for gene therapy development and clinical trials. We are not going to go into the details of this guidelines, but क्या था कि यार सब लोग सबको सेफली करोगे, हर चीज को अच्छे से टेस्ट करोगे, approved mechanisms ही होंगे, the only in these labs it can be done, those kind of things were there. We don't have to go into the details of this, but Indian Council of Medical Research has come up with guidelines about how gene therapy products should be developed and how it should be tested, evaluated, those kind of things. So gene therapy क्या है and gene therapy के applications, और applications तो समझते, but gene therapy where can it be used? Now एक ये देखिए, एक एग्जांपल है कि पी फाइजर इज अ कंपनी जो मेडिसिन बनाती है। हेमोफीलिया बी जीन थेरेपी सक्सीड्स इन लेट स्टेज स्टडी, और हेमोफीलिया बी डिजीज ट्रीट करने के लिए जीन थेरेपी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया एंड दैट हैज बीन मोर और लेस सक्सेसफुल। व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस? पहले ना लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हेमोफीलिया बी इज। इट्स अ डिजीज जहां पे व्हेन यू देखो व्हेन यू स्टार्ट ब्लीडिंग, समटाइम्स कई बार ऐसा होगा, चोट लग जाती है, यू ब्लीड, तो वेरी क्विकली ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड, है ना, क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लीडिंग रिड्यूसेस और एंड स्टॉप्स, बट एंड दोस क्लॉटिंग्स आर मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन योर बॉडी। दोस क्लॉट्स आर मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन। जैसे ही ब्लीडिंग होगी, दोस क्लॉट्स विल स्टार्ट गेटिंग फॉर्म्ड, बट समटाइम्स व्हेन दोस क्लॉट्स, those genes are not functioning properly, clots will not be formed. So hemophilia B is one such bleeding disorder which affects you when you have, or your body is not able to form a blood clotting protein known as factor 9. आपकी बॉडी फैक्टर 9 प्रोटीन नहीं बना पा रही है, मींस द जीन एसोसिएटेड विद फैक्टर 9 प्रोटीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। Then what do you suffer from? Hemophilia B. आपको चोट लगेगी, फैक्टर 9 प्रोटीन की वजह से क्लोटिंग नहीं होने की वजह से क्लोटिंग नहीं होगा, एंड यू विल ब्लीड, यू विल कीप ऑन ब्लीडिंग। हेमोफीलिया में डेथ भी हो जाती है। नाउ एक चीज और समझते हैं, मोस्ट ये कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्लीड, तो ये क्लोटिंग वाला पार्ट है। फैक्टर 9 is one such coagulation factor, and hemophilia B is the result of the body not making enough factor 9, and it is caused by defective gene located on X chromosome. तो we know chromosomes को X chromosome, Y chromosome में डिवाइड करते हैं,
तो हेमोफीलिया बी का जो फैक्टर, हेमोफीलिया बी को कॉज करने वाला प्रोटीन कौन सा है? फैक्टर 9 प्रोटीन. इफ फैक्टर 9 प्रोटीन इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, देन हेमोफीलिया बी इज कॉज्ड. एंड फैक्टर 9 प्रोटीन का जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे है? एक्स क्रोमोसोम पे. इससे एक ये पॉइंट आता है कि मोस्ट पीपल विथ हेमोफीलिया बी आर मेल, बिकॉज मेल्स के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है. अब फीमेल्स के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर एक क्रोमोसोम में फैक्टर 9 इफेक्टिव नहीं है, they have another chromosome to deal with that. Are we getting it? तो फीमेल्स के केस में हेमोफीलिया बी होने के चांसेस आर लेसर. मोस्ट हेमोफीलिया बी केसेस आर विथ मेल्स. व्हाई? बिकॉज द फैक्टर 9 प्रोटीन का जो जीन है दैट इज वेयर एक्स क्रोमोसोम पे. मेल्स के केस में अगर वो डिफेक्टिव है तो देयर इज नो अल्टरनेटिव, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस दिस. ओके, अब बिफोर वी गो टू थेरेपी, जीन थेरेपी, एक बार अगेन आई विल समराइज दिस होल थिंग. हेमोफीलिया बी किस वजह से हो रहा है? क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है. क्लॉटिंग is not taking place. Why in case of hemophilia B? It is because of factor 9 प्रोटीन. इसका जीन कहां पे होता है? इसका जीन एक्स क्रोमोसोम में होता है. And because male has one X chromosome, female has both XX chromosome, male has one X chromosome, and if this chromosome पे this gene is defective, जिससे factor 9 is not getting produced, तो male doesn't have any other option. So there are more chances of hemophilia B happening in males. क्या इतना समझ में आया? पक्का? What did they do? They developed a therapy known as Fidencogene elaporovic. It is designed to help patient produce factor 9 themselves after a one-time treatment, as opposed to current treatment which focus on regular infusion. तो without gene therapy, what is the option? आपकी बॉडी में रेगुलरली फैक्टर 9 प्रोटीन विल बी पुट इन. योर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट, तो यू विल हैव टू बी सप्लाइड दैट, एंड दैट रिक्वायर्स रेगुलर सप्लाई. बट यहां पे व्हाट डिड दे डू? वो जाके जीन थेरेपी कर रहे हैं. जीन थेरेपी करने की मतलब जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम पे जो जीन होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ हेल्दियर वन. Not in the entire body, not in all cells, but in some cells, which will lead to your body producing some factor 9 protein, so that your dependency on outside factor 9 protein would not be there. Simple, this is what happened. अच्छा, ऐसा एक और डिजीज होता है हेमोफीलिया ए, दैट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर 8. आपका अगर डिफेक्ट फैक्टर 8 प्रोड्यूस करने वाला प्रोटीन, फैक्टर 8 प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला जीन डिफेक्टिव है, दैट में कॉज यू हेमोफीलिया ए. यहां पे भी दिस इज ऑल्सो अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है? क्या सेम है? नहीं, अलग अलग है. अलग अलग प्रोटीन की शॉर्टेज की वजह से हो रहा है. वहां फैक्टर 8 था, या फैक्टर 9, वहां फैक्टर 9 था, यहाँ फैक्टर 8 है. जल्दी जल्दी में अपना एक डाउट खराब कर लिया ना. दो हो गए तुम्हारे. सॉरी. ये समझ में आया? अब देखो, मेनी ऑफ दीज टर्म्स ना, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, या फैक्टर 8, फैक्टर 9, दे में अपीयर न्यू पहली बार में. इसीलिए यू आर टेकिंग कि आप बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं. ऐसा कुछ है नहीं. एज यू रिवाइज इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, इट वुड बी लाइक हाँ आता तो है यार. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं पढ़ा. ओके, लेट्स गो टू CAR T cell therapy. पहले समझ लेते हैं व्हाट इज CAR T cell therapy, एंड देन वी विल गो थ्रू द नोट्स. It's a very easy thing, you just have to understand the process. देखो, let's say our person is suffering from cancer. Is suffering from cancer. Now, generally, in cancer, a problem that occurs is our body's immune system is not able to fight against it. If some cell was introduced in our body from outside, our immune system would be like, who the hell are you? Get out of here, else I'll kill you. But in case of cancer, it is your own cell
which has gone, which has become malignant, which has gone bad, and they are multiplying, तो your immune system is not able to deal with it. बहुत सारे cases में this is the scenario that occurs. ये समझ में आया? तो let's say these are the cells. Which cells? मैं रेड में बना देता हूं, कैंसर cells. These are our cancer cells, and our immune cells, जैसे T cells, B cells, etc., are not able to fight against this. Fine, ये problem है. What we do in CAR T cell therapy is, first we take out T cells from here. We take out T cells from our body, our own T cells. T cells are like white blood cells. They are our immunity cells. B cells, T cells हमारे blood का part है, and they are अपने immune system वाले cells. They'll help us fight diseases. We take out T cells, and let's say this is my T cell. T cell is supposed to kill pathogens, है ना? ये जो let's say this pathogen has come from outside our body. Our T cell is supposed to get attached to it and kill it, but it is not able to do it with these cells because these cells are our own cell. But these are cancer cells, right? There must be some difference in them. These are cancer cells. These must be slightly different from our healthy cells. So, on these cancer cells, on their surface, there may be some protein which are not there in healthy cells. We have taken out these T cells from our own body, and we will modify it a bit. We'll modify it in such a manner that it produces a protein on its surface called chimeric antigen receptor. This receptor is a receptor for this protein. कैंसर सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन है, which is not there on the healthy cells, we have modified a T cell in such a way that it has a receptor for what protein? This protein, so that it can go and get attached to and target this. So we modified our T cells, and then these modified T cells are put in our body. These are CAR T cells, those T cells which have chimeric antigen receptor. These T cells go in our body, and they are like, I have the receptor for cancer cells. Let me receive them. Let me destroy them. CAR T cell therapy, यहां पे हमने cells में modification किया, gene में modification किया, so that it is able to produce this chimeric antigen receptor, put back in the body, and it will go and destroy the cancer cells. How to treat cancer? One mechanism, one recent method which has been developed using gene therapy mechanism is CAR T cell therapy mechanism. Please let me know if you understand the whole thing. Notes बहुत simple हो जाएगा if you understand it like this. Any doubts, any concerns? ऐसे CAR T cell therapy कुछ तो अजीब सा लगता है, कुछ बड़ा लगता है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है. T cell के surface पे हम chimeric antigen receptor develop करें so that it can go and this chimeric antigen receptor is the receptor for which antigen? Antigen or the protein which is on the surface of cancer cells. B cell और T cell में difference बेटा वो भी पढ़ा देंगे, don't worry. वैसे आपने क्या ब्लड तो पढ़ लिया होगा ना, ब्लड इज ए टिश्यू, वो पढ़ लिया, वहां बी सेल टी सेल ये सब नहीं पढ़ा क्या? ओके, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे. अभी बोथ ऑफ देम आर इम्यून सेल्स, इतना ध्यान रख लो. अभी डाउट ये कि ये CAR T सेल थेरेपी पर समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पक्का? ओके, तो अब एडवांटेजेस की बात करेंगे. तो एडवांटेजेस, अ डिजीज व्हिच वाज अनट्रीटेबल बिकम्स ट्रीटेबल, है ना? बाकी सारे मेथड्स फेल हो गए हैं, डिजीज स्प्रेड हो रहा है. टेक आउट द टी सेल, मॉडिफाई इट, put it back, and this T cell itself will be targeting the cancer cells. प्रॉब्लम है थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपेंसिव है.
कार्टी सेल थेरेपी आप जाके यूरोप में, यूएस में थेरेपी लेना चाहते हो, 4-5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। इट्स इन दैट सेंस इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। क्या पता है रिसेप्टर आपने कैसा बना दिया, आपके हेल्दी सेल्स को अटैक करने लगा तो क्या होगा। इट्स अ वेरी टेक्निकल स्पेसिफिक थिंग। ऐसे टू मेक दिस ऑन बोर्ड, टू एक्सप्लेन दिस, आई डिड इट इन 5 minutes, बट इन रियलिटी दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू। क्या समझ में आ रहा है हमें ये? ओके। CAR T cell therapy. Generally, when we have cancer, these are the options available. Surgery, where you remove the cancerous part. Radiotherapy. Radiotherapy में we talked about the two forms of radiotherapy. Internal beam radiation therapy और external beam radiation therapy. Nuclear science tech में पढ़ा था. That will destroy the cancer cells. But उसमें healthy cells also get destroyed. या सर्जरी जब कर रहे हो ना, तो यू अब सर्जिकल ब्लेड जो है, इट इज नॉट सो प्रिसाइज दैट वो सेल के लेवल पे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैंसर एंड नॉन कैंसर सेल्स। तो समटाइम्स इट लीव सम कैंसर सेल और समटाइम्स इट टेक आउट द हेल्दी सेल्स आल्सो। Similarly, there is chemotherapy and immunotherapy mechanism where using chemicals and all or other methods we fight cancer cells, we fight cancer. But इन सबसे बेटर एक मेथड है CAR T cell therapy. How does it work? Patient के blood से we draw T cells. These T cells are modified in the lab. क्या? So that on their surface chimeric antigen receptor develops. These receptors have affinity for protein on the surface of tumor cells or cancer cells. Then these modified cells are infused back into the patient's blood after conditioning them to multiply more effectively so that they'll multiply faster. These cells are even more specific than targeted agents and directly activate the patient's immune system, and they are known as living drugs. These cells are living cells and they're able to treat your disease. So their very accurate treatment is easier and only one time, it's a one time therapy. आप जाओ हॉस्पिटल में, आपका ब्लड लिया जाएगा, come back a few weeks later when T cell has been extracted and CAR T cell has been created, it will be put back in your body. You will be kept in hospital for a few days to observe you. After that, you can be discharged and you can live your life peacefully without worrying about anything. These are some of the advantages. It can even deal with non-responsive cancer patients. Non-responsive cancer patient मतलब ये नहीं कि patient non-responsive है, cancer non-responsive है. Cancer is not getting affected by chemotherapy or other mechanisms. वहां पे भी it can work and it will have lifelong benefits. CAR T cell therapy बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक चीज है ना, इसीलिए सारी चीजें बहुत सिंपल है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी अपन ने कल पढ़ ली। अगर आज मैं कुछ समझा नहीं पा रहा हूं तो इट्स माय फॉल्ट कि मैं आपको एकदम सिंपल करके नहीं समझा पा रहा, है ना। इसलिए आस्क क्वेश्चंस इन केस यू हैव डाउट्स। योर 2 डाउट्स आर डन, एक ही बचा है। ओके, CAR T cell therapy in India. What is the scenario in India? तो इंडिया में भी the first major clinical trial related to this therapy was published almost a decade ago. Indigenously developed therapy in India was successfully performed only in 2021. In 2023 एक IIT बॉम्बे में कंपनी बनी थी इम्यूनो एक्ट। इट वाज इंक्यूबेटेड इन IIT बॉम्बे। इसने अपना एक जीन थेरेपी प्रोडक्ट NextCar19 बनाया है एंड दिस NextCar19 हैज गॉट मार्केट ऑथराइजेशन। तो NextCar19, कार इज काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, CAR19 इसलिए क्योंकि इट इज टारगेटिंग दो सेल्स जिसपे CD19 प्रोटीन है एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बी सेल लिम्फोमा। तो अब बी सेल ल्यूकेमिया, बी सेल लिम्फोमा क्या होता है? B cell lymphoma is a form of cancer that starts in a white B cell called lymphocyte. B cell lymphocyte makes antibodies, the proteins in the immune system that help fight infection. They are often found in lymph nodes or other lymphoid tissues such as spleen. In B cell lymphoma, in the cancer, what happens? Some lymphocytes are no longer healthy and they don't fight infections. Instead, they grow out of control and fight normal cells and cause the lymph node to become bigger. So B cell lymphoma में
your B cells basically start harming your healthy cells. अब हमें we have to bring changes there. तो B cells के surface पे CAR9 वो CD19 प्रोटीन होता है. To remove this harmful, to target this harmful B cells, what do next CAR19 do? It takes out your T cells, it modifies them so that those cells which have CD19 protein though could be targeted, and by that this gene therapy is possible. तो CAR T cell therapy कैसे होता है वो तो हमें पता ही है, हमें बस यहाँ पे ये जानना है next CAR19 is a product, gene therapy product which has been developed by ImmunoAct, क्या नाम है उस कंपनी का? ImmunoAct, incubated in IIT Bombay, and it is fighting what? B cell lymphocyte या B cell leukemia. अभी ये एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए अनदर वर्जन इज गेटिंग रेडी. ये समझ में आया? नेक्स्ट CAR19 क्या कर रहा है? डोनेटिंग सलाइवा. ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, मे बी आई विल रीड इट, है ना, तो बताऊंगा. हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एप्लीकेशन. क्या बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वी स्टार्टेड विथ व्हाट? पहला हेल्थ एप्लीकेशन था कि वैक्सीन बना लो. दूसरा हेल्थ एप्लीकेशन था कि दवाइयां बनाओ, जैसे इंसुलिन. Biotech made it possible. Penicillin, Biotech made it possible. Then what did we move to? Gene therapy. Gene therapy में we looked at CAR T cell therapy. इंडिया में जो अभी मार्केट अप्रूव्ड है इम्यूनो एक्ट और नेक्स्ट CAR19 by Immuno Act. We studied that. What are some other applications of biotech? एक एप्लीकेशन है molecular diagnosis. What is molecular diagnosis? Disease diagnosis basically. डिजीज डायग्नोस करने के लिए बायोटेक इज यूज्ड. अब व्हाट इज दैट? देखो, इफ सम वायरस इन्फेक्ट्स मी, तो दैट वायरस का जेनेटिक मटेरियल वुड बी इन माय, दैट वायरस विल बी इन माय बॉडी. तो व्हेन आई टेक सम सैंपल्स फ्रॉम माय थ्रोट, फ्रॉम माय नोज, जहां पे वो वायरस में हैव इन्फेक्टेड मी, उसमें देयर वुड बी सैंपल्स ऑफ द वायरस आल्सो. आई नीड टू स्टडी दैट वेदर दैट कि इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड और नॉट, तो आई लुक फॉर कोविड वाला वायरस है कि नहीं, और कोविड वाला वायरस कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? उसका जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, है ना. तो व्हाट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड दैट? व्हाट हेल्प्स मी डू दैट? बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स मी डू दैट. तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके आप डायग्नोसिस भी कर सकते हो. दो मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस विल टॉक अबाउट. एक तो आरटीपीसीआर, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट वाला, एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट वाला. दोनों देखते हैं. आरटीपीसीआर में व्हाट वी यूज्ड टू डू इन आरटीपीसीआर, व्हाट डिड वी डू? देखो, लेट्स से दिस इज माय कोविड वायरस. कोविड वायरस इज आरएनए वायरस. तो फर्स्ट व्हेन वी लाइक डॉक्टर्स यूज्ड टू टेक योर सैंपल. डू यू रिमेंबर? आपका कोविड में थ्रोट से सैंपल लेते थे, नोज से सैंपल लेते थे, आप छींक मारते थे. दैट सैंपल में दे collected the all the viruses that they got, and then virus has RNA in it. COVID virus has RNA in it. This RNA was extracted. It was first reverse transcripted, RT, to become DNA. Then it went through the process of PCR. Polymerase chain reaction में क्या होगा? This copy of DNA will multiply. तो DNA, DNA, DNA. Now we can study it in detail and see whether it is associated with COVID-19 or not. This is what was happening in RT-PCR, reverse transcription, polymerase chain reaction. और RT-PCR में तो एक्चुअली कोविड वाला वायरस का प्रोटीन ही दिख गया, वो डीएनए ही दिख गया ना. वैसे आरएनए एंड एसोसिएट डीएनए
So there was no doubt. If this test said you are positive, then you are positive. If this test said you are negative, so there are chances that you may be negative. Yeah, abhi enough infection has not occurred. Are we getting this? No. What is antibody? आपका एक antibody test भी होता था. Antibody test का idea ये है कि यार when this person is infected by a virus, the immune system of the body creates antibodies. When you are infected by a virus, your body creates antibodies to fight the virus. तो antibody test में हम एंटीजन को आरटीपीसीआर में we were directly looking at the antigen, that is the virus. देख रहे हो कि whether that virus was COVID or not. In antibody test, we'll look for antibodies. When COVID infects you, when corona infects you, your body will start producing antibodies. If your body has antibodies, then you must have been infected by corona. But यहाँ पे if you don't have antibodies, it was said that नहीं RT-PCR test करा लो. If you have symptoms and don't have antibodies, इस वाले test में you came negative, then you may have just been infected and your body has not developed enough antibodies, and that is why आपको antibody भी दिख नहीं रहा है. तो यहाँ पे no did not mean that you didn't have COVID. It meant हो सकता है but अभी you don't have enough antibodies and thus get RT-PCR test done. So these are methods where we use biotechnology to diagnose a disease. This is molecular diagnosis. बताओ ये मेंस में भी यूज कर सकते हो कि नहीं? हम पढ़ प्री के लिए गए, प्री में आती हैं ये चीजें, बट इट इज एज यूजफुल फॉर मेंस. बायोडाइवर्सिटी में भी ज्यादा फर्स्ट 2-3 क्लास छोड़ दोगे एनवायरमेंट की, रेस्ट ऑल द क्लासेस विल बी यूजफुल फॉर योर मेंस आल्सो. फर्स्ट 2-3 क्लासेस में क्या होगा, जब विल टॉक अबाउट स्पीसीज, सांप कहाँ मिलता है, शेर कहाँ मिलता है, भालू कहाँ मिलता है, those things are not asked in preliminary examination. Else when we'll go to air pollution, water pollution, climate change, ozone layer depletion, national efforts, schemes, programs, वो सब आपके लिए मेंस के लिए यूजफुल रहेगा. तो ना अभी आप वापस आ गए हो शिद्दत से प्री की तैयारी पे, तो आप अच्छे से करो. While revising also think मेंस में एप्लीकेशन आएगा बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ में, इतने एप्लीकेशन मारेंगे धुआं धुआं कर देंगे. अभी अभी पिछले क्लास के बाद एक स्टूडेंट केम टू मी फ्रॉम योर क्लास ओनली. ही सेड कि उनके कोई रिलेटिव, शायद रिलेटिव या फादर, वो न्यूक्लियर साइंस में काम करते हैं, और उन्होंने बोला कि इतने सारे एप्लीकेशंस पढ़ा दिए, इसमें से कुछ होता नहीं है प्रैक्टिकली. हमें क्या है, हमें तो एग्जाम में लिखना है ना. व्हाट एम आई टीचिंग यू? आई एम टीचिंग यू व्हाट टू डू इन एग्जाम्स. थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वो सब हो रहा है नहीं हो रहा है, आई डोंट केयर. लेट मोदी जी केयर अबाउट इट. और मिनिस्टर ऑफ साइंस जो भी है, कौन है नहीं पता नहीं, जितेंद्र सिंह है. चलिए कोई बात नहीं. हाँ, उतारो स्वेटशर्ट. ऐसे कैसे उठ के आ जाते हो तुम? नहीं, तुम्हारी डिमांड्स बदलते रहते हैं. मैं नहीं. गेट खोल लो. तुम्हारी डिमांड्स खत्म बदलते रहते हैं. ये कलर से, ये कलर भी तुम्हें परेशान कर रहा है. अच्छा यार, एक तो एसी चला दो, कलर चेंज कर दो. अभी ठीक है. ओके, लेट्स कम बैक. अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस समझ में आ गया है. कार्टी वो आरटीपीसीआर एंड एंटीजन एंटीबॉडी वाला मैकेनिज्म. इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? पक्का? ओके. Let's come to disease control through genetically modified organisms. अब ये क्या होता है? देखो, today the last topic that we are going to study, there will see
एक्चुअली देयर आर 2-3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स जो समझ लेते हैं। एक तो लास्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे कि यार जो मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज वो स्प्रेडिंग मलेरिया और स्प्रेडिंग डेंगी, है ना। तो मलेरिया का जो प्लास्मोडियम है या डेंगी का जो वायरस है, इट गोज इन मॉस्किटोज एंड देन मॉस्किटो इज एबल टू स्प्रेड इट टू समवन एल्स, राइट। What if we genetically modify the mosquito so that it's not able to spread it? But then how will you modify them? एक एक मच्छर को पकड़ोगे क्या? जब पकड़ लिया तो मार ही दो, है ना। तो नहीं, we do this kind of genetic modification so that the feature spreads in other mosquitoes also. Let's say we pick up 2 mosquitoes and उन दोनों को genetically modify कर दिया so that they are now not in a position to spread the disease. But this feature that we have introduced here, this genetic modification that we have introduced here should also be such that कि when this mosquito mates with anyone else, जो बच्चा produce होगा, the बच्चा should also have this feature. So in this mechanism, with time, this feature will spread in all the mosquitoes, and the disease would get controlled. When vector is not able to spread the disease, it will be under control. तो genetic modification से ये भी किया जा सकता है. Towards the end of the class, we'll see that. Then personal genomics. अब personal genomics समझते हैं क्या होता है, how it is helpful in health sector. Let's say अपन वेनु का एक जीन नहीं, वेनु का एक सेल नहीं, वेनु घबरा जाता है, इसका नाम लिया, वेनु का एक सेल निकालते हैं और वेनु के सेल में डू वी हैव एंटायर डीएनए ऑफ वेनु? टेक आउट दोस डीएनए एंड मैप इट कि वेनु हैज जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 21,342 and those genes are producing this protein, this protein, this protein, this protein. We can have this list. Now doctors can look at the list and say, Venu, you have this gene and this gene is very common among people who have diabetes. So right now you may not have diabetes, but be very cautious. Why? Because this gene is prominent among people who suffer with diabetes in future or any XYZ disease. तो उससे can I take, this is personal genomics, personal genes इसके पढ़े गए, देखे गए, and then preventive diseases, preventive measures can we take? Can we also diagnose things? Venu may be suffering from some disease and doctors have not been able to find a reason, but after doing this, will we be able to do that? Thus, is it an application of biotechnology in the health sector? Sorry. समझ में आया? Personal genomics. तो personalized medicines, predictive medicines, precision medicine, precision, like exactly what would you need? And stratified medicines, it predicts the right kind of treatment. Efficacy of toxicity of chemotherapy or radiotherapy can also be understood. Why in your body this chemotherapy may not work because your body is producing this protein which will be able to repel it. No, all those kind of things would be understood. देखो कुछ बहुत complicated नहीं है ना. Personal genomics, छोटी सी चीज है. Once you understand the basics, things are easy. Okay, let's go to transgenic animals. ये पिछले साल मैंने अलग बुकलेट में पढ़ाया था, नेक्स्ट डे पढ़ाया था, तो इसलिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूएशन फ्रॉम प्रीवियस बुकलेट, बट आपकी क्लास में मैं एक ही दिन में करा देता हूँ. ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाना हमारा एप्लीकेशन नहीं है. व्हाट विल जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल्स डू फॉर अस? बहुत सारी चीजें हैं. फर्स्ट, जैसे of all the genetically modified animals that we have produced, which is the most common? Mice. 95% of the genetically modified animals that we have produced, I'm not talking about insects and all, animals that we have produced are mice. Why? Because genetic, biological and behavioral characteristics of mice are very closely resembling that of humans. Their immune system are like humans, so a lot of things can be tested on them. This is not the only reason. हम आप बोले गोरिल्ला में तो ज्यादा मैचिंग होगी, तो why not test things on गोरिल्ला? गोरिल्ला को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है. चूहे को रख लिया छोटे से बॉक्स में, कन्वीनियंट.
गोरिल्ला का लाइफ साइकिल होगा 50 साल का, यू गिव इट सम थेरेपी एंड देन यू लुक फॉर 50 ईयर्स के बुढ़ापे में इसके साथ क्या होगा, डायबिटीज होगा या नहीं होगा. Whereas a rat will have a life cycle of 4-5 years. So you can study the detailed life cycle much faster. Holding a rat is way more less inexpensive, and generally they are mild temper and docile. How transgenic animals have been helpful? So they have been helpful for normal physiology and developmental studies. If you bring some changes, how its development changes. उसके बाद we'll theorize कि humans में भी ये होना चाहिए. Then we can go for human trials. If it's safe for animals, study of disease, biological products can be produced from them. जैसे human protein used to treat अच्छा इसमें ये समझते हैं कि suppose we need to produce some protein, some human protein. So we can genetically modify a cow or buffalo or any of those milk producing animals so that in their milk more such protein is produced. Say if you'll come here, in 1997 the first transgenic cow, Rosie, produced human protein enriched milk. This human protein was 2.4 gram in every liter of the milk. The milk contained the human alpha lactalbumin and was nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. ऐसे ही vaccine safety testing etc can be done on them, chemical safety testing can be done on them. समझ में आ रहा है? फिर एक एग्जांपल है उसका, यूजिंग गोट्स टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक ड्रग्स. ये न्यूज में था लास्ट ईयर. तो एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या होता है पहले इसे समझते हैं. एंटीथ्रोम्बिन 3 इज समथिंग दैट कीप ब्लड फ्री ऑफ क्लॉट्स. आपका ब्लड जब फ्लो हो रहा है आपकी बॉडी में, क्लॉट शुड बी फॉर्म्ड व्हेन द ब्लीडिंग इज occurring. When your blood is exposed to outside environment, at that time clot should be formed. But when your blood is flowing in your body, वहां क्लॉट बन गया तो वॉट लग जाती है ना. तो दिस थिंग एंटीथ्रोबिन 3 कीप्स द ब्लड फ्री ऑफ क्लॉट्स. एंड अगर ये इसकी डेफिशिएंसी है, देन पर्सन सफर्स फ्रॉम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नोन एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. व्हाट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म? यहां पे ब्लड्स में क्लॉटिंग हो जाती है एंड वो लंग्स में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. दिस अकर्स एंड दीज पीपल हु सफर फ्रॉम pulmonary embolism, they are given antithrombin injection. अब एंटीथ्रोम्बिन हम बनाए कैसे? तो वी जेनेटिकली मॉडिफाइड अ गोट सो दैट उसके मिल्क में मोर एंटीथ्रोम्बिन कुड बी प्रोड्यूस्ड. इन दिस वे वी कुड एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम देयर एंड कुड कीप सप्लाइंग इट टू द ह्यूमंस. फिर जीएम इंसेक्ट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स की बात करते हैं. व्हाट कैन बी, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स वाला टॉपिक मैंने नोट से हटा दिया बिकॉज वो कॉमन सेंस से अब हो जाता. Let's understand that. देखो, tell me the insects which are useful for us. हाँ, हनी बी. हनी बी is useful for us. अब हनी बी को आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो so that the honey which is produced maybe, और अच्छा हनी बी हनी खुद से प्रोड्यूस नहीं करता, वो कलेक्ट करती है ना. तो मे बी देर एबल टू सर्वाइव क्लाइमेट चेंज बेटर. अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं कर, हनी बी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. Can we do that kind of genetic modification? Yes, we can do that. Or silkworm, we can genetically modify it to survive for longer or to produce more silk. Right? तो जितने भी insects हैं, genetic modification can always help us in creating a behavior or creating changes which are useful for us. तो उसे अलग से ना एक टॉपिक पूरा पढ़ाने का ज्यादा मतलब नहीं था. That's why I have removed them. अब आते हैं environmental applications में. मेडिसिन वाला एप्लीकेशन हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स वाला एप्लीकेशन भी हो गया. लेट्स टॉक अबाउट एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन. देखो एनवायरनमेंट में व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग. द बिगेस्ट इशू इज क्लाइमेट चेंज. द वर्ल्ड इज फेसिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बायोफ्यूल इज वन सच मैकेनिज्म. अच्छा, डू यू नो, एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाउट आता है कि सर व्हेन वी बर्न बायोफ्यूल, इथेनॉल या फिर बायोगैस, CO2 तो तब भी एमिट हो रहा है ना, देन क्लाइमेट चेंज तो तब भी होगा.
How is biofuel considered safer? तो कहीं से भी लो, पहले सोच लो, पहले सोचो CO2 एमिशन कैसे रिड्यूस हो रहा है ये बताओ। जब हम बायोफ्यूल यूज कर रहे हैं, इथेनॉल बर्न कर रहे हैं, तब भी तो CO2 एमिशन हो रहा है। तो फिर क्लाइमेट चेंज के लिए ठीक कैसे है बायोफ्यूल? बताओ बताओ। अरे एटमॉस्फेयर में आप CO2 ज्यादा डालोगे तो प्रॉब्लम होगा ही ना बेटा, इवेंचुअली CO2 ही बनता है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। देखो, बायोफ्यूल जो CO2 एमिट कर रहा है ना, उसने भी पिछले साल उस CO2 को लिया होगा एटमॉस्फेयर से। हाँ, बायोफ्यूल, the CO2 that biofuel is producing, it just absorbed that CO2 last year from the atmosphere. The plant must have done photosynthesis, no? And we are again going to grow the plant. It is again going to remove that CO2 from the atmosphere. Please understand it. Whereas coal has been there in Earth's crust for millions of years. That CO2, that carbon was stored there. Now you have released it, it's not going to go back there immediately. So biofuel is a better source of CO2, better fuel when it comes to climate change when compared to coal or other fossil fuels. Got it? Do we all understand this? Okay. So when it comes to biofuel mein we use biotechnology everywhere. Let's talk about first generation biofuel. First generation biofuel mein biogas is first generation biofuel. Is biogas first generation biofuel? Yes. Biogas या ethanol is first generation biofuel. Is it produced with the help of biotechnology? Ethanol? Not modern biotechnology, but classical biotechnology. Abhi last year, I think last year or last to last year, there was this question. Biotechnology ka application, something like this. And all these things were application of biotechnology in energy sector. First generation biofuel is also using biotechnology. Second generation is also going to use biotechnology. Third generation is also going to use biotechnology. Modern biotechnology will come into play in fourth generation, where algae, we will genetically modify algae to increase its biomass. Now, please understand one more thing. See, we as humans, when we are kids, do we keep growing? But once we reach a particular age, the growth hormone that is produced in our body stops getting produced. Our body has been programmed in such a manner. What if we genetically modify ourselves so that we keep producing those growth hormones? Can we become bigger and taller? Yes, we may become unstable also. That's why we should not do that. But we can do that with algae. Why reduce your growth? Keep on growing. Keep on becoming bigger, because eventually what do we need? We need your biomass. More biomass, more biofuel, more CO2 emission, more CO2 removal also. Algae will do what? Algae will do photosynthesis. It will be absorbing CO2. So, is it the use of biotechnology in the environment sector? Environmental biotechnology, this can be one of the example. Other is biodiversity conservation. Now, in biodiversity conservation, there are lots of things we can do, but one very interesting thing that is being done is by a company Colossal in US. They are going towards de-extinction. Now, what is meant by de-extinction? Something which has become extinct already, bringing it back. For example, mammoths. Do you know what mammoths are? वो ice age में big elephants were there, no? Those are mammoths. They have become extinct. They don't exist anymore. Though we have icy places on Earth, we can if we go towards the northern hemisphere, more towards the North Pole or towards the South Pole, we have places which are full of ice and all, right? But mammoths don't exist anywhere.
Scientists, the colossal wale scientists, they were able to find some dead bodies of these mammoths under the ice, where some gene may have survived. They took out those genes and they are inserting those genes in the current elephants to bring in features of the mammoths. Now, they will not exactly be the same like them, but in this way they will try to, this is an experiment. If possible, in future they'll be able to bring back more such animals or plants which have become extinct. Up, this is criticized also. They say that we should not do that. Why? Where would you keep these mammoths? In the ecosystem for thousands of years have now evolved to survive without mammoth. So nature ko we should not disturb like this. But still, this is just one example ki how biotechnology can be useful for environment. Then to detect invasive species. Invasive species are a big problem. Now environmental DNA yaad hai? Barcoding on that, will we be able to? So in the water body we do not know whether African catfish is there in my water or not. But when I take samples from the water body, I get dead cells. From there I take out DNA. From there I extract barcodes, and by that I can determine whether invasive species exist here or not. How do I use biotechnology for that? Environmental DNA, right? Okay, so these were applications of biotechnology. Ab we'll go into a topic of gene mapping, gene sequencing in somewhat more detail. Let's understand this. एक मिनट, डाउट्स आ गए बहुत सारे. सर ये बायोटेक कैसे करें कि एकदम दिक्कत ना हो? साइंस टेक्स्ट समझ कम आता है, अब ठीक समझ आता है, भूल मत है फिर डर. बेटा है तो हिंदी लिख लो, इंग्लिश लिख लो. डर से टेस्ट, अच्छा डर से टेस्ट नहीं देते, बहुत दिक्कत है सर. क्या क्या करें इसका बताओ. देखो, चाहे कुछ भी हो, वी शुड नॉट स्किप टेस्ट. I'll give you a very straightforward reason. एक एक्सपेरिमेंट कर लेना आप. यू हैव अ टेस्ट टुमारो, कल ही मत कर लेना. आज ना घर जाके ये सोचना कल टेस्ट नहीं है, एंड नोट द टाइम दैट यू विल स्टडी टिल 1 टुमारो. And when you have a test at 1 tomorrow and you have to give test, no matter how well prepared, how badly prepared you are, when in your head it is there कि I have to give that test, और फिर नोट कर लेना आप कितना पढ़ोगे. Not only time, the concentration. एग्जाम से पहले जिस फोकस के साथ हम पढ़ते हैं ना, वो कहीं नहीं आता. अरे कॉलेज में वॉशरूम पे बैठ के तुम पढ़ रहे होते हो. हाँ, ये रियलिटी है. हर जगह पढ़ रहे होते हो. ब्रश करते टाइम ऐसा होता है. मैं, हाँ कहा, हाँ नहीं होता. कंप्यूटर साइंस वाले तो क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे 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 तो अच्छे से याद है कि परेशान हो जाता था मैं. तो क्या पढ़ रहा है बे? मैंने कहा ये रिव्यू कर रहा हूं. पेपर अंदर ही छोड़ देना, अब मैं करूंगा. ये होता था. ब्रश करते टाइम ये हो गया, यार मुझे समझा देना, बता देना. वी हैव डन दीस थिंग्स चलते टाइम. दिस डजंट हैपन व्हेन यू डोंट हैव एग्जाम. तो इवन इफ यू आर एबल टू स्टडी थोड़ा थोड़ा मोर बिकॉज ऑफ टेस्ट्स, वो थोड़ा थोड़ा मोर, जस्ट थिंक ऑफ 70 टेस्ट. इफ यू डू इट प्रॉपरली, 2 टेस्ट में बस इतना और पढ़ लिया कि आधा क्वेश्चन और सही हो जाए, तब भी 15 मोर क्वेश्चंस के लिए यू विल बी रेडी. 70 टेस्ट, मैं बोला 2 टेस्ट में सिर्फ इतना और पढ़ लेना एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ टेस्ट,
कि यू आर रेडी फॉर वन मोर क्वेश्चन। 35 क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा रेडी रहोगे। क्या पता उसमें से 5-10 एग्जाम में आ जाए। 10 क्वेश्चंस आर 25 मार्क्स। सो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, what should we be doing? We should be attempting test. Whether we are well prepared or not, we should not have this option कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा। Don't create that option. अपने मन को वो एटीट्यूड कि थर्सडे को टेस्ट नहीं है ना, I'll give it online. I've taken hybrid. No, you'll waste your time. थर्सडे को टाइम है तो पढ़ो ना आगे के टेस्ट के लिए, ज्योग्राफी के लिए पढ़ो, बाकी चीजों के लिए पढ़ो। But if the institute has scheduled a test, you should not miss a single test. आपके 70+ टेस्ट है, आप वो सारे करो। मैं आपको ना प्रॉमिस कर रहा हूं, इन योर एग्जामिनेशन सिर्फ जो चीजें आप पढ़ रहे हो, टेस्ट में कर रहे हो, उससे इतने क्वेश्चंस होंगे कि यू विल क्लियर द एग्जाम। सिर्फ उससे इतने क्वेश्चंस होंगे। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि इफ यू सी द रिजल्ट्स, नो कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं टेस्ट में। ऑलरेडी 600 स्टूडेंट्स हैं पीएमपी प्रोग्राम में, 600 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। टेस्ट कितने रिजल्ट में कितने बच्चों की रैंक आती है? 120। हाँ वही 15-20% बच्चे प्री क्लियर करेंगे, 16% बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। एंड देन आई विल आल्सो टेल यू वन मोर थिंग दैट वुड हैपन। आप लोग ना बाद में बोलोगे यार रिवीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नोट्स बल्कि ऐसा है वैसा है। अबे पढ़ो ना, सब कुछ आखिरी में जाके थोड़ी होगा। आई टेल एवरीवन you cannot attend my classes in April or May. You have to do it in January, February only. अप्रैल मई में आपको वो जो शॉर्टकट बता रहे हो ना, जिसमें आधा भगवान इन्वॉल्व होनी चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, वो काम आते हैं। अगर आपको अच्छे से भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, अपने बल पे क्लियर करना है कि भगवान हमेशा साथ नहीं देते हैं और तुम लोग तो पापी हो, तो पढ़ो, गिव दोस टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम बैक। तो जीनोम सीक्वेंसिंग और जीन मैपिंग को समझते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग बेसिकली मींस डीएनए लेके उसे सीक्वेंस करना एंड फाइंडिंग ऑल द जीन्स देयर। दिस इज जीनोम सीक्वेंसिंग। जीन मैपिंग, with every gene what is the protein that's going to be produced, that is gene mapping. So genome sequencing is figuring out the order of DNA nucleotide or bases in a genome, order of A, C, G and T. How is it done? पहले information from blood is extracted, researchers cut it into smaller pieces and tag them. A sequencer is then used to decode these smaller chunks of genetic material, but our genome sequencing technology is still not good enough. We have seen the concept of dark DNA to understand that we have still not been able to completely map our genes. Now, applications क्या है इसके? Once, तो were we using gene sequencing and gene mapping in personal genomics? Do you remember personal genomics? Gene sequencing, तो predictive and preventive medicines, faster and efficient diagnosis of rare genetic diseases. You're suffering from, you're having some symptoms, but doctors are not able to understand why are you suffering from this. Gene mapping can help you for sure say कि देखो यार, this gene is problematic for you. Then gene mapping is also used to understand differences between various species and how they evolved. Snow leopard and Indian leopard, they evolved from the same species. How do we know? When we do that gene mapping and we see, okay, almost everything is same. There's slight differences which may have emerged over the last 2000 years. Then gene mapping also help us in understanding diversity within the same species. Within human beings कितना variation है, that is gene mapping will be able to help us do that, and then it will help us fight disease also. एक ना Genome India project है. Genome India project क्या है? इसमें India has completed compilation of 10,000 human genomes representing 83 different population groups, or about 2% of countries 4600 population groups. So we have divided the country into 4600 different population groups, and from around from these population groups, which
So far 83 population groups में से we have identified people and we have done their gene sequencing. Idea is this: India में what is the genes का scenario, which are the genes which are more prominent, which are the genes, disease causing genes which are there, what should be the health wise, what are the factors that we should be focusing upon, why are in what way our body type can be different from the body type of European people. ये सारी चीजें जानने में समझने में it can be very beneficial, in making policies it can be very beneficial. This is Genome India project. ये फ्यूचर में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वांट्स की जो अभी हमारे पास 10,000 जीनोम्स है उसको वी टेक टू 1 मिलियन जीनोम्स कवरिंग ऑल द पॉपुलेशन ग्रुप्स इन अ लॉट मोर डिटेल. अब इससे फायदे क्या होंगे? अब वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड जीन सीक्वेंसिंग के फायदे क्या होते हैं. तो इंडिया के लेवल पे व्हेन वी डू दैट, व्हाट विल बी द बेनिफिट्स? इसका सेकेंड फेज ऑफ प्रोजेक्ट भी आएगा. ठीक है, ये सब हम पढ़ सकते हैं. हाँ, अदर सच प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 1000 जीनोम प्रोजेक्ट, एक अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट. लेट्स गो थ्रू दैट. लेट्स अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज द प्रोजेक्ट जिसमें पहली बार एक ह्यूमन का कंप्लीट जीन वाज मैप्ड. वी फेल्ट कि वी हैव मैप्ड ऑल द जीन्स. डार्क डीएनए सेइंग कि नो नो, यू हैवंट बीन एबल टू डू दैट. But human genome project done more than 20 years back, completed more than 20 years back, told us that we have 20 to 25,000 humans have 20 to 25,000 genes. अब बेटा I'll take all these doubts later, है ना. अभी अभी ये सारी बातें मत करिए, पढ़ाई कर लीजिए. कौन सा टॉपिक कब कवर होगा. जैसे somebody is asking sir when energy infrastructure ये कवर होगा. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में करंट अफेयर्स वाले में कवर करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है ना, इकोनॉमी में 12 क्लासेस में आई एम ओनली एबल टू कवर द कोर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. तो करंट अपडेट्स होते हैं वहां पे आई कवर एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया. यहाँ पे जो मुझे 12 क्लासेस एलोकेटेड है पीएमपी में, उसमें आई विल कवर जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, मनी बैंकिंग, मनी सप्लाई, कैपिटल मार्केट, एक्सटर्नल सेक्टर, और एक और क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, जीएसटी, ये सारी चीजें. दीज आर द टॉपिक्स दैट आई एम एबल टू कवर इन 12 क्लासेस इन 50 आवर्स. दिस इज व्हाट आई विल डू. ये मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे भी डाला है पूरा. जो लोग अभी करना चाहते हैं कि वो कर सकते हैं, है ना. बट कोशिश करो, डोंट डाइवर्ट योरसेल्फ फ्रॉम द प्रोग्राम. प्रोग्राम के साथ रहो, जो भी चल रहा है वो करो. जब इकोनॉमी आएगा तब इकोनॉमी करना. आई विल मेक श्योर कि आपका प्रिपरेशन इकोनॉमी का बहुत अच्छा रहेगा. तो व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज द प्रोजेक्ट वेयर वी कंप्लीटेड ह्यूमंस का जीन मैपिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वेयर वी वर एबल टू आइडेंटिफाई 20 to 25,000 genes. Then 1000 genome project was another project. इसमें तो we were able to do it for the first time. One human का complete gene was mapped. 1000 genome project. Here 1092 sequences or like 1000 plus humans के gene sequences were published in 2012. Later UK government ran a project which sequenced 1 lakh genomes by 2018. इंडिया का भी we have sequenced 10,000 genomes इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, राइट. There's a European effort going on where 1 million plus genome across 24 countries will has been sequenced. Then we have a Earth biogenome project. Do you understand what prokaryotes and what eukaryotes are? The bacteria generally prokaryotes में आ जाएंगे, है ना. Eukaryotes single celled होते हैं, multiple celled होते हैं. They can be single celled also, ना. Both, they can be both. अर्थ पे जितने भी यूकैरियोट्स है ना, सबकी जीन मैपिंग करना. नॉट एवरी इंडिविजुअल बट एवरी स्पीसीज. दैट इज अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट. ऑल नोन यूकैरियोटिक स्पीसीज. आर वी गेटिंग दिस? ओके. तो दिस जैसे बिकॉज वी वर स्टडिंग इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट, साथ में हमने ये कुछ और अर्थ बायोजिनोम प्रोजेक्ट या फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ब्रीफली ये भी देख लिया. लेट्स कम टू
the next topic, the topic of stem cells. Okay. Stem cells. देखो, when you must have in when you were studying cells, you must have studied about muscle cells. है ना, muscle cells ऐसे spindle shape वाले होते हैं. Right? You may have studied sperm cell. Sperm cell की वो पूंछ होती है ना, जिससे वो it can move quickly. लड़कों को पैदा होने से पहले ही भगाना शुरू कर दिया जाता है. You have to run. Millions of you, only one egg. Right? ऐसे heart cell, liver cell. These are specialized cells. They're forming part of some organs. But there are some cells which are, let me call this cell. There are some cells which are undifferentiated. ये कोई particular, ये muscle cell नहीं है, ये lungs का cell नहीं है, या ये muscle, ये blood cell नहीं है. They are undifferentiated cells, unspecialized cells. But they can, when time comes, let's say when some emergency occurs, when some injury occurs, these cells may convert into some specialized cells. कि मैं muscle cell बना दूंगा, or I'll make other cells. So these are stem cells. So stem cells are undifferentiated, unspecialized cells which can remain stem cell while they multiply, or they can become some specialized cells. अभी ये सब लिखो मत, पहले समझो. अब think of this. When life began as a single egg, वो single egg cell जो fertilize हो गया, single egg cell ovum got fertilized by sperm, is a single egg cell. Was it a heart cell? Was it a lung cell or skin cell or muscle cell? No. अब शुरू में, within first 1 or 2 days, that first few days, like eventually you'll see a heart forming, you'll see skin getting formed, you will see lung getting formed, है ना? After in a few months, doctor is able to tell you, see, you can hear the heartbeat. आप ऐसे heartbeat बच्चे की अपनी सुन के बड़े खुश होगे, मेरे अंदर एक इंसान धड़क रहा है, डर भी लगेगा. But initially, all those things have not been formed. Initially, वो egg cell, let's say egg cell multiply होके 1000 cells बन गए. Are those 1000 cells जो एक chunk of cells है, they are neither heart cells, they are not lung cells, they are not skin cells, they are just stem cells. So stem cells can be there in your adult body also, which acts as stores. But there can be embryonic stem cells also at the beginning of your life. You are what? A few cells, and it is from those cells everything else has developed. It is from those undifferentiated, unspecialized cells everything has developed. So stem cells can be somatic stem cells. जब आप mature हो गए हो, आपकी body में some stem cells are there, or some stem cells can be embryonic stem cells. Are we getting this? What is stem cell? What is somatic stem cell? अभी हमने somatic cell nuclear transfer पढ़ा था. इस पर्सन का egg cell नहीं लिया, इस पर्सन का सेल लिया, we took somatic cell का nucleus लेके हमने we transferred it into the egg cell. That was somatic cell nuclear transfer. Using that, we wanted to create a clone of Venu. Venu, your name is Venu, right? Venu. What is the correct pronunciation? Venu? Venu. Okay. So we wanted that. यहाँ पे you can have somatic stem cells, you can have embryonic stem cells. अब थोड़ा significance समझते हैं stem cells का. Think of the embryonic stem cells. Those cells eventually created a human being.
those cells created a human being. अब ऐसे सोचो, suppose I need a heart transplant. Can, with advanced technology, stem cells create a heart? Right? I get a skin burn and वो पूरा जल जाता है. Can stem cells help me in generating skin? Yes. It has a lot of potential. It has a lot of opportunity. When stem cells are used for treating these problems, that is stem cell therapy. Therapy is the treatment. With the help of stem cells, you're doing it, and that is why many people, जैसे जो अपना placenta होता है, do you understand what placenta is? Placenta has stem cells. So many people have started getting it stored, frozen, so that those stem cells are protected in future as advancements in stem cell technology happens, and I need a heart rather than waiting for transplant. I will like take out my stem cells, make it create a new heart. That will be my own heart. My immune system will also not reject it. Do we understand what stem cell therapy is? एक और चीज समझते हैं. देखो, suppose this is a adult cell, not stem cell, adult cell, and this is a stem cell. How do these two differ? These two differ because of some genetic features. Here the feature may be different. When it multiplies, brain of the cell is the nucleus. What it is going to do, it is going to remain a stem cell or it is going to become some specialized cell. All that information is provided here. है ना? So this cell, which is a mature adult cell, can we genetically modify it to become stem cell? Can we bring changes in there to become stem cell? Yes. Change तो आप कुछ भी, आप जीन बदल दिया आपने जाके, इसका प्रोग्राम बदल दिया, we can do that. But these stem cells, suppose I change it, this was a normal somatic cell, I change it to become stem cell, I'll call it induced stem cells. I'll call it what? Induced. I made it change to become stem cell. Are we getting this? ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? What is stem cell? Stem cell therapy क्या है? Normal stem cells and induced stem cells, somatic stem cells and embryonic stem cells. अच्छा, एक ना stem cells can further be divided into totipotent, pluripotent, unipotent, ये सारी चीजें, ये भी समझ लेते हैं. देखो, when we have egg cell in the beginning and that egg cell multiplies into a few cells, can those few cells become any cell type? लंग्स भी उसी से बनेगा, हार्ट भी उसी से बनेगा, है ना? सारे सेल टाइप उसी से बन रहे हैं. Those are kind of pluripotent stem cells. But there can be some cells जिससे एक ही टाइप का सेल बन सकता है. Those are unipotent stem cells. These are also stem cells. These are not specialized cells. But what can they specialize into? They can specialize into one particular type of cell. This is what? This is unipotent stem cell. ऐसे there is classification also. So let us, I hope overall picture समझ में आया. Now we'll go through the notes. We'll go through the nitty-gritties that you will revise. Why do I go through the notes? Because now, while revising, this is the order that you will follow. And when you understand everything, revision becomes very easy. Okay. Stem cells are a class of undifferentiated cells that are able to differentiate into specialized cells. These can act as reservoirs to replenish stock of specialized cells. In addition, in many tissue, they serve as a sort of internal repair system. There are two important characteristics of these cells. One, they are unspecialized. They are not lung cell or anything else. And दूसरा,
when they convert, they can remain a cell, or they can remain a stem cell, or they can become another type of specialized cell. Now, we can differentiate stem cells into embryonic stem cells. We understand what embryonic stem cells are, and somatic or adult stem cells. अब देखो, somatic or adult stem cells में there are one type comes from fully developed tissue such as brain, skin, bone marrow. In our bone marrow, do you know, red blood cells keep getting formed. So there are stem cells which are located there. But blood cells keep getting formed. So there are stem cells there, but they can be induced pluripotent stem cells. Induced का मतलब समझ में आ गया? Pluripotent मतलब these stem cells can be converted into multiple types of cells. These are adult stem cells that have been changed into a lab to be more like embryonic stem cells. This was first achieved in 2006. Induced pluripotent stem cells don't seem to be different from embryonic stem cell, but scientists have not yet found one that can develop every kind of cell and tissue. But induced pluripotent stem cells exist. Ab stem cells can be classified on these on the basis of their potency. कि आप किस किस टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हो. On the basis of that, they can be classified as totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, and unipotent. Unipotent stem cell क्या है? The stem cell which can convert into only one type of specialized cell. जैसे muscle stem cell है. When you exercising, when you are working out a lot, आपके muscle cells पे बहुत pressure पड़ता है. Some of them get destroyed, some of them get damaged. But at that time, your stem cells will quickly form new muscle cell. But that stem cell can only form muscle cell because muscle stem cells are unipotent cells. But then there can be oligopotent cells. Oligopotent cells क्या है? They can form a few type of cells. जैसे adult lymphoid or myeloid cells are oligopotent. They can differentiate into a few different type of cells. फिर we have multipotent cells. These differentiate into closely related cell types but multiple types of cells. जैसे हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, इससे रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स में बी सेल्स, टी सेल्स, सब कुछ कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम विच सेल? हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स. तो दिस इज अ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल. देन वी हैव प्लूरिपोटेंट. ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट. जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है ना, वहां पे जो सेल्स है उससे ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स आर कैन बी फॉर्म्ड एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स. एम्ब्रियो के बियॉन्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स है जिससे प्लेसेंटा बनता है, वो उससे फॉर्म नहीं हो पाएगा. अदर देन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स दे कैन फॉर्म ऑल द सेल्स. दोस काइंड ऑफ स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट. एंड टोटीपोटेंट, जैसे आपका सिंगल एग था, प्लेसेंटा भी उसी से बना है. These can differentiate into all possible types of stem cells. These are generally found in earliest stages of embryonic development. शुरू के 1-2 दिन में, जो 3 दिन में सेल्स रहते हैं ना, वहां पे अलग से प्लेसेंटा नहीं बनाया अभी. From those cells only placenta would be formed. Those are totipotent. Like everything in your body can be formed from these cells. Those are totipotent, pluripotent. Everything in your body can be formed from them except extra embryonic cells, that is the placenta wala cells. Except that, everything can be formed, then it is pluripotent. Then multipotent, multiple types of, जैसे hemolytic blood cells, hemolytic cells. Oligopotent, a few type of cells. Unipotent, only one type of cell can be formed from that. क्या हमें समझ में आ रहा है? Are you sure? Okay. नहीं बेटा, please understand. His question is, what's your name? Jay. Jay's question is, so the cells which are making heart and lungs, are they somatic cells? Not necessarily. Please understand. When we talk about embryonic cells, have hearts been formed from them also? Pluripotent cell, are they forming all kinds of cell? So they can be that also. But today, when there is some injury occurring in your heart and heart recovers, what kind of cell that will that be? Somatic stem cell.
In your heart today, some somatic stem cells may be there. When your heart faces some injury, those stem cells may convert into heart ke cells. Those are not embryonic cells. Embryonic cells existed when you were in embryonic stage. Now you're no more an embryo. So all the stem cells that you have today is what? Somatic stem cells. So your question, ki sir, heart cells can be formed by somatic stem cells or embryonic stem cells? Both. Did I answer you? Have I been able to solve this doubt? Okay. Kumar Shubham is saying sir, totipotent versus pluripotent समझ में नहीं आते. Simple है. Toti is like everything. Pluri is like almost everything. So the pluripotent can form all the cells in your body except extra embryonic cells. That is placenta. Placenta is outside embryo. Placenta connects embryo with mother. So that is extra embryonic cell. Pluripotent can form everything except extra embryonic cell. Whereas totipotent can form even embryonic cells. They're totipotent. Everything. Just think of this. Egg got fertilized within 2-3 days. Has placenta been already formed? No. Will placenta be formed? Yes. How will it be formed from? Where will it be formed from? What will it be formed from? It will be formed from the existing cells. So initial 2-3 days में eggs के fertilization के बाद the cells which exist are totipotent. But once placenta has been formed, the cells which are left there are pluripotent because from them everything can be formed, but what cannot be formed? Placenta. Those are pluripotent. Then we have multipotent, oligopotent and unipotent. Now, do we understand this? Sure. There may be like thoda, because we had less time. I have not covered enough current affairs, so I'll keep covering current affairs in future. इसमें तो आपको you don't even have to join current affairs program. ये तो I'll be putting on YouTube. तो current updates also I'll put on YouTube only. कुछ रह जाएगा तो we'll do that. But this is enough. जितना आप पढ़ रहे हो बायोटेक में, I assure you आपने अपने GS फाउंडेशन कोर्सेस में भी इतना नहीं पढ़ा होगा. You didn't understand this. You understood it. किंग कर्तव्य भी मूड मुझे कर दूर खड़ी है मधुशाला. Now did you understand it? What's your name? लोकेश. नाम तो बड़ा ही नॉर्थ इंडियन सा रखा हुआ है. No, I had a friend in childhood, लोकेश. वो मुझे बिना हेलमेट के बाइक पे बिठा के घुमाता रहता था. फिर एक दिन भाई ने गाड़ी ठोक दी. फिर भाई नहीं रहे. हाँ, ये था, रियलिटी थी. He was one of my best friends in my childhood, and he would take me everywhere. And our parents used to say, you should not go like this. You don't wear helmets. You drive rashly. So when I was in Kota, I had moved to Kota. He was still riding bikes, and this happened. I have another location now. Don't ride bikes like that. Please wear helmet. Okay, Lokesh. Chalo, come back. Stem cells ke type. Are we clear about that? Okay. Now, recent research in stem cell technology. This I have explained you. कि यार, with more R&D, stem cells would be able to treat lots of things. देखो, I'm losing hairs. गंजा हो रहा हूं मैं. हंस रहे हो तुम. भगवान देख रहे हैं. तुम टीचर पे हंस रहे हो ना. गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, है ना. तो मैं गंजा हो रहा हूं. क्यों हो रहा हूं? यहाँ के जो सेल्स है विच आर सपोज टू प्रोड्यूस आई एम गोइंग बॉल्ड, है ना. मैं गंजा हो रहा हूं मीन्स दैट. तो व्हाई एम आई लूजिंग हेयर्स? wait, come back, focus. Because there are cells here which are supposed to produce hair follicles, and those have, my hair follicles are dying. It may be because of nutrition and everything. No, but were those cells and hair follicles, they were produced from some cell? And were those cells produced from stem cells? As stem cell therapy develops in future,
तुम हंस रहे हो ना? भगवान सब देख रहे हैं. God sees everything. Okay. Heart. If I need a heart transplant with advancement in science technology, liver transplant, pancreas transplant, anything, will it be possible? Organs availability is a big issue in India. Stem cell therapy can help us produce those organs in a more effective manner. Right now, all these things are not being done, but a lot of research is happening. Right now, hematopoietic stem cells are being used to treat various blood diseases. That is one place where this is a multipotent stem cell. So these are the blood cells forming adult stem cells found in bone marrow. Every type of blood cell in the bone marrow starts as a stem cell, and these are being used. But there's a lot of research going on. Bone marrow, blood stem cells are used in bone marrow transplant, treating people with conditions such as Fanconi anemia. Stem cells may help your health in future in many ways. New tissues and organs, it can help you develop that. Other treatments could target illness such as type 1 diabetes. अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा type 1 diabetes को. देखो, diabetes is of two type, type 1 and type 2. Who will quickly explain me type 1, type 2 diabetes? Anyone? Sorry, one by raise your hand and then. Both are insulin dependent. जब तुम मुझसे लड़ती हो तो इतनी जोर से बोलती हो. अब तुम्हें आंसर करना है तो एकदम धीरे धीरे बुलंद आवाज में बोलो. ओके. हाँ देखो, yes, she is more or less right. Type 1 diabetes is the diabetes where your pancreas are not able to produce enough insulin. Type 1 diabetes is that. So right from childhood, people will have to take insulin. In fact, till the time insulin was not discovered, anyone who was born with type 1 diabetes used to die. 1-2 साल में they were gone. And that is why insulin ka discovery was a huge thing. And very soon they got Nobel Prize. 1920s में कभी डिस्कवर किया था, 1-2 साल में they were able to get Nobel Prize because they had such a big impact. When your pancreas beta cells are not able to produce enough insulin, that is type 1 diabetes. Type 2 diabetes is when over the year you have eaten so many sweet and everything, you keep on adding a lot of sugar in your body, your pancreas keep on producing insulin उसको मैनेज करने के लिए, but eventually your pancreas से बहुत हो गया. My production of insulin is not leading to sugar getting reduced because this idiot is eating and drinking and not worrying about me. So your body is not able to produce enough insulin with obesity and all, or becomes less sensitive to insulin. That happens generally with obesity and other health. Obesity is not the only criteria, there can be other issues also. That is type 2 diabetes. Type 2 diabetes generally पहले old age में मिलता था, अब तो even people who are 20s, 30s, 40s, they are also seeing the situation of type 2 diabetes. अब type 1 diabetes is because आपके pancreas में beta cells are not functioning properly. Can stem cell help us in that? In fact, this has been done. अभी last year ही news था, last year चाइना में they treated type 1 diabetes. Type 1 diabetes का solution क्या होता था? Always carry insulin with you. But here they treated type 1 diabetes permanently by stem cell therapy. Stem cells को use करके those beta cells which were not functioning, new stem cells or new beta cells could be produced and functional beta cells could be produced. So in 2024, a woman with type 1 diabetes in China regained her insulin production after receiving a transplantation of reprogrammed stem cells that
reportedly reverse the disease. Reprogrammed, induced, यहाँ पे chemically induced stem cells were produced. They were programmed to produce beta cells, and they could use it. New medicines could also be tested on cells made from pluripotent stem cells. आपके हार्ट पे मेडिसिन कैसे इंपैक्ट करेगी? नया हार्ट ही बना लो और डालो मेडिसिन, देखो कैसे, how is it going to impact. Stem cell research is also important for learning about human development. Eventually we all have developed from stem cells. So when we do stem cell research, we also see how the growth has occurred. Lab grown meat can be something that is produced from stem cells. Okay, let's understand the concept of lab grown meat, because I'm not going to teach it separately. Let me teach it here only in a lot of detail. So how many of you are vegetarians? कोई है? बहुत सारे हैं. नाइस. दिव्या, तुम वेजिटेरियन हो? इंसान का दिमाग खाने को भी ना. चलिए, so Divya is a vegetarian, है ना? Divya, why are you vegetarian, बेटा? नहीं, I'll tell you why would anyone be vegetarian? Because नॉनवेज वालों को किसी का मर्डर करना पड़ रहा है ना? किसी का खून करना पड़ रहा है. आप एक चिकन को मार के खा रहे हो, एक मटन को मार के खा रहे हो. नॉन वेजिटेरियनिज्म इज मोर वायलेंट. इज दिस द रीजन? दैट इज द रीजन, राइट? दैट्स व्हाई शी इज अ वेजिटेरियन, दो शी डिडंट चूज इट, but she's a vegetarian for that reason, or that may be the scenario everywhere with all of us. But I'll prove you that's not the scenario. चलो प्रूव करते है ना. Let's go to a बकरा. बकरा है ना, उसका बस एक स्टेम सेल लेते विदाउट हर्टिंग इट. एक सेल लेते, उसको हम लैब में इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाते हैं. प्लूरिपोटेंट. नाउ फ्रॉम दैट स्टेम सेल कैन वी प्रोड्यूस लिवर, लंग्स, हार्ट, मसल. तो कीमा कलेजी विदाउट हार्मिंग एनीवन कैन बी प्रोड्यूस्ड. खाओगी? तो देखो, इट्स यहां पे तो वो नहीं हुआ ना. क्या नहीं हुआ? किलिंग. तो इट्स कल्चरल. Vegetarianism, non-vegetarianism, our food habit is not associated with whether it's violence or not. It is cultural. If we are born in a family, in a society, in a culture where non-veg food is consumed, we get used to it. If we are born in a family, society, group where non-veg food is not consumed, we are not used to it. We believe that we are superior. For नहीं, actually देखो, all of us have, as humans, we have killed so many animals. As we have expanded agriculture, don't we use insecticide, pesticide? क्या कितने चूहे, सांप कितने मरे हैं, है ना, फूड के लिए? This is something that happens in nature. So, but now do we understand how lab grown meat would be produced? Lab में stem cells, and then keep it in a structure, provide it the right nutrition, that stem cell will multiply, pluripotent stem cell, it will produce all the components of a bakra. No violence, only taste. Energy efficient, because bakra, to become 10 kg of bakra, it has moved around a lot and wasted a lot of energy. In lab, only liver is getting formed. Must keema kaleji. Right? That is lab grown meat, non-violent. Are we understanding this? Lab grown meat का पूरा फंडा समझ में आया? Okay. मैंने दिव्या का नाम लेके छोड़ दिया. चलिए. Stem cell to treat type 1 diabetes, we have covered it. We understand it. Branches of biotechnology. This is basically when biotechnology is used in health sector, red biotechnology. When biotechnology is used in this sector, agriculture, green biotechnology. ऐसे terms हैं, उसे जान लेना. It's factual only. Okay. Biotechnology in India, again factual part. There is Department of Biotechnology. There is GEAC, जो Genetic Injury Appraisal Committee. It is part of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It's a statutory body. It was set up under the 1989 rules, जिसके अंदर
वी वर रेगुलेटिंग द सिस्टम। एक ये इनिशिएटिव है बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो ई3, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। देखो आइडिया ये है, विथ more advancement in science and technology, biotechnology is going to play a very important role in manufacturing. In future, biotechnology is going to play a very, even today it's playing a very important role, but in future, biotechnology is going to play a very important role in manufacturing. We should focus on more R&D so that we are able to become a leader in that manufacturing. We are able to produce things which are able to help us fight environmental problems. We are able to increase our manufacturing, leading to more growth in our economy and more employment opportunities in our economy. उसके लिए government has launched a Bio E3 policy, Biotechnology for Economy, Environment and Employment. Biotechnology for Economy, Environment and Employment. अब पर्पस क्या है? अच्छा, एक तो Bio E3 policy is being steered by Department of Biotechnology. Department of Biotechnology comes under which ministry? Ministry of Science and Technology. Okay. Key features: improving manufacturing processes. How do we do that? So in Bio E3 policy, government is supporting R&D. Government is supporting creation of hubs where biotechnology based research could happen. Government is supporting new ventures, new startups also, so that biotechnology based वही 3 points याद रखने हैं. Economic growth, when we'll do more manufacturing, when we'll be the leaders and will supply goods to rest of the world, will it benefit our economy? Yes. When we do manufacturing is going to be employment intensive. Will it lead to employment generation? Yes. And while doing this, we should also focus on that kind of manufacturing which will be environment friendly, plus producing those goods and services which will be environment friendly. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? We are improving biomanufacturing process. The idea is to prepare India for future by building competencies, promoting research, educating and training young talent, so that as biotechnology develops, we are the leaders. दूसरा, innovation driven support for R&D and entrepreneurship. मैंने बोला startups इन सबको promote किया जाएगा. Bio 3 policy में this is what we are doing. Setting up of several biomanufacturing and bio AI hubs and bio foundries. These are the places where industry partners, startups, they will be able to come together and increase the biotechnology based research and production in the country. And 6 sectors have been identified: high value bio based chemicals, biopolymers and enzymes, smart protein and functional food, precision biotherapeutics. Now do we understand therapeutics क्या होंगे, biotherapeutics क्या होंगे and precision biotherapeutics क्या होंगे? Do we understand this? Climate resilient agriculture, biotechnology, using biotechnology in agriculture sector so that it becomes climate resilient. Carbon capture and utilization, again environment wala component, using biotechnology to develop products which will be able to capture carbon from environment. Marine and space research, so that life support system for astronauts could be created in future. Abhi for astronauts food go from where? From earth. But in future, if with the help of biotechnology we are able to grow food in space, that will be a huge thing. Are we getting this? So all these things are component of Bio E3 policy. Exam में preliminary mains के time जब हम पढ़ेंगे इसे, we'll say what are the limitations, what is the way forward. यहाँ पे what are the things that we are doing in here, किस ministry के अंदर है, ये broad चीजें हैं, ये हम देखेंगे. This is something. These are the things that we should remember. Okay. CHIM studies, skim studies, क्लास डिस्कशन करना था, इसे समझ लेते हैं. इसको you'll have to note it down because I've not included in the class. Controlled human infection model. Controlled human infection model. Let us understand this.
ओके, व्हाट इज दिस? ऐसे समझते हैं, सपोज आई एम डेवलपिंग मेडिसिन फॉर डेंगी। डेंगी का कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, दिस ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सपोज हम डेवलपिंग सम मेडिसिन के वैक्सीन बना देते हैं। लेट्स मेक वैक्सीन फॉर डेंगी। नाउ one option to test this vaccine is I take all these people and I infect you people with I give you vaccine. Which vaccine? The vaccine that I have produced. Fine. And I'll say in 2 days you'll be immune. And after 2 days, I infect all of you with dengue. तभी तो वैक्सीन टेस्ट होगा. You have been given vaccine. 2 days, as I say, vaccine is going to be ready in 2 days. Your body is going to be immune in 2 days. But 2 days later, I come and infect you with dengue and show you. See, you're not getting affected. Why? Because you are immune to vaccinated, you're immune to dengue. But here, what did I do? I intentionally came and infected you. Controlled human infection model. This isn't allowed in India. This is allowed in Europe. This is allowed in US. Where is it not allowed? India. This is a model to test medicines, test new vaccines. India may intentionally infecting anyone is not allowed. There is demand from the R&D sector to allow us to do that. Government has not yet done it. But ये term अगर आता है exam में, what is controlled human infection model? You should be clear about it. It has been allowed for I think only one case, कोई मलेरिया का कोई treatment के लिए हुआ था. Otherwise, this is not allowed in India. अब what is the advantage? If this was allowed, I could have tested my medicines very easily. When this is not allowed, how do I test my medicines? Just give me a second. When this is not allowed, how do I test my medicines? I will give my vaccine to 1 lakh people in my locality and would wait for them to naturally get infected. Not all of them. Let's say in a locality everywhere, a lot of people get dengue. If I give vaccine to everyone, and in that area that year no one gets dengue, I'll be able to say that my vaccine is effective. But here I had to give my vaccine to lakhs of people, and then I was able to test it. Monitoring it, everything is way more difficult, way more expensive than compared to giving you vaccine and then infecting you. So India mein human trials are done in this manner, give vaccines to a lot of people and then see. But this is an expensive model, time consuming model. We do not allow controlled human infection. क्या समझ में आया? CHIM studies. Did we understand what CHIM's controlled human infection model is? Synthetic biology. Synthetic biology is nothing but biology is what? Living organism. उसको modify करना. So you will say, sir, gene editing was also synthetic biology. Yes, gene editing is also synthetic biology. When you are inserting something from outside, that is also synthetic biology. Or take a microorganism, a simple one which doesn't have a lot of genes, remove its DNA and put a artificially created DNA there. That living organism is completely programmed by you to function in a particular manner. That is also synthetic biology. So it is the field of science that involves redesigning organisms for useful purposes. For example, microorganisms harnessed for bioremediation. When you want to, do we understand what bioremediation is? Pollution को आप साफ करते हो, तो when you modify microorganism to deal with pollutants, that is, you synthetic biology say you have created this organism
Rice modified to produce more beta carotene. Golden rice. Genetic modification can also be synthetic biology. Yeast engineered to produce rose oil. This can be eco-friendly and sustainable substitute for real roses. You would see people collect rose या rose water बनाने के लिए a lot of rose is removed. What if that rose water can be produced by yeast? So in large quantity, yeast can be modified, genetically modified to produce that rose water, and it can be done. Right? These are all examples of how synthetic biology refers to bringing changes in a living organism to make useful products. तो आप बोलोगे सर ये तो बायोटेक्नोलॉजी है. हाँ, similar to that, but can DNA be made from scratch using synthetic biology? मतलब कुछ नहीं, एकदम स्क्रैच से you become the god कि this is the DNA. DNA is made up of those ATCG pairs and all. अब देखो ideally देखोगे technically तो we have not even been able to sequence the entire DNA, but we know so many genes. So can we make a DNA which is containing all the genes that we want it to contain? Recent advances in biotech has enabled scientists to make new sequence of DNA from scratch. For example, scientists have synthesized entire bacterial genome from scratch. एक बैक्टीरिया का पूरा जीनोम स्क्रैच से scientists have synthesized in the lab. In 2010, scientists from J. Craig Venter Institute synthesized the first synthetic bacterial genome, Mycoplasma mycoides JCV1 Syn 1.0. ये they synthesized from scratch, not the entire living organism. Bacteria can be a single cell bacteria. उसका genome निकाल दिया and insert your own genome. Process oligonucleotide synthesis. First short DNA fragments are chemically synthesized using phosphoramidite chemistry. These can be 20-200 base pair long. Assemble them and then do error correction. This can be used in synthetic biology. This can be used in gene modification. But lengthy DNAs will be difficult to produce. Why? Because lengthy DNA में not all the DNA is properly understood, properly known. 2016 में scientists were able to develop bacterial cell mycoplasma with a minimal genome built with the help of man-made machines. Genome, genes completely made by machines. उससे उन्होंने bacterial cell mycoplasma का पूरा जीन बना दिया. The cell is called JCVI Syn 3.0, containing 5,31,560 base pairs and just 473 genes. This is the smallest artificial genome ever created. इतना छोटा genome होता नहीं है किसी का. It doesn't exist anywhere. This artificial genome created, transplanting it into living cell which has its own genome lost during the process, made it the first viable self-propagating cell, one that did not exist in nature before. This cell, like this genome, who has created? We have created. Humans have created. See, we have to know all these things. When we'll do PYQs, we'll see these kind of questions have been asked. More importantly, as policy makers in future, when politicians will tell you, इस कास्ट के लिए ये कर दो, उसके लिए वो कर दो, बोलना भाई देख देश ऑलरेडी बहुत पीछे है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है और तुम क्या करवा रहे हो. अभी भी कास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, we keep on fighting for that, right? And the world has moved so ahead. Just think, in Indian labs creating DNA from scratch and एक पूरा living organism where everything is planned by us. This is playing God, right? This is perhaps, if the God exists somewhere, we may have been created like that. कैसे ऐसा we have evolved, that's not the case, but जो भी भगवान में मानते हैं ऐसे बनाया होगा अगर बनाया होगा. सिंथेटिक ईस्ट जीनोम प्रोजेक्ट 2.0, इसमें भी हमने पूरा सिंथेटिक जीनोम बनाया है. जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, इसको और समझ लेते, बस लास्ट थिंग, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होता है. साक्षी थक के गले दे रही है मुझे.
लास्ट थिंग है ना, उसके बाद बस एमसीक्यूज करने रह जाएंगे। अच्छा नहीं रहेंगे, आज ही खत्म करके जाएंगे ना, डोंट वरी। मैंने बोला रह जाएंगे कल के लिए, तो वो नाराज हो गई तो। हाँ हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ साक्षी आई बी बी टेकिंग ऑल द एमसीक्यूज टुडे, ओके। बेटा बैठोगे तो तुम भी, नहीं तो अंकल को जो कॉल करूंगा ना मैं। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल मॉस्किटो पॉपुलेशन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज इट? देखो, आई हैड टोल्ड यू कि वी कैन जेनेटिकली मॉडिफाई मॉस्किटो so that what happens, it is not able to spread the disease, but then we cannot pick up all the mosquitoes and genetically modify them. But there's a technology called gene drive technology. With the help of this technology we can ensure that all the mosquitoes which are produced after me, because of me, they all have these genes. जैसे normal inheritance में I have those genes, the other person doesn't have that gene, तो मेरे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे होंगे, दे मे हैव दैट जीन, दे मे नॉट हैव दैट जीन, एंड इन द एंड आल्सो दिस पॉपुलेशन बी वेरी लेस. बट इन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, if I have that gene, then my kids are going to have that gene. And if my kids have that gene, when they mate with someone to produce other species, to produce other kids, they will have this gene. When these mate with someone to produce other kids, they will have these genes. So gene drive technology is a mechanism to ensure that the gene that you want should be propagated to all your kids necessarily goes there. So when this is possible, we can do that gene modification in a mosquito which protects, which ensures that it will not spread the disease. And then that feature should go to all the kids of this mosquito. अभी जैसे when I become a father, मेरी वाइफ है, मैं हूं, हम दोनों के सारे फीचर्स बच्चे में नहीं जा रहे हैं. Half of my chromosomes, half of her chromosomes are going to go in kid. So this chromosome, this gene which is going to make it or prevent it from spreading disease may not go to the kid. There's only 50% chance. जैसे यहां पे था, there's only 50% chance that it may go to the kid, right? But sorry, यहां पे था, there's only 50% chance that it may go to kid. फिर यहां पे भी 50% चांस, दो में से एक को ही गया. फिर यहां पे भी 50% चांस, दो में से एक को ही गया. But gene drive inheritance या gene drive technology allows that feature goes to all the kids. Okay, so gene drive technology is one of the approaches used to create GM mosquito to systematically control their population. Using gene drive technology, the end result is a mosquito inheriting some gene rather than the inheritance to follow the rule of Mendelian genetics. Thus, it ensures that a specific gene is inherited by all most offsprings rather than usual 50% chance. This can cause a gene to spread rapidly throughout the population. Using this technology, we will be able to ensure that the entire population of mosquitoes becomes such that it is not able to spread the disease. Gene drive technology. Okay. Now, I think it's done. PYQs? No? क्या करोगे घर जाके? पढ़ोगे? किसने बोला पढ़ेगा? देखो अभी ना 1 घंटे और पढ़ लो मेरे साथ, जाके थक के सो जाना. सुबह उठना 6 बजे. तुरंत नहीं रिवाइज करना है, जाके रेस्ट करना है ना. चलो ठीक है, आई विल सी यू टुमारो एट 2, है ना. थोड़ा सा पीवाईक्यूज पहले करने की कोशिश करो, सो दैट I don't spend a lot of time in doing these PYQs. Tomorrow I'll give you the health booklet. Okay. Thank you very much.